Hello, hello, girls and boys. How's it going? Good to see you. Let's see who all is live today. Hello, hello. Let's see how many people are there. Please say where you're logging in from. Neeraj Jagga, sir. Hello, Neeraj. क्या हालचाल? Cosmo. अरे बढ़िया यार. Doing very good. How are you doing? Good to see you. Lone Kim. Hello, Kim. Good to see you too. अरे शिरडी. अरे पावन धरती. Good, Cosmo. Thank you. Sudhir. Hey, Sudhir. Good to see you. Thank you, yeah. Dimple Kamar. Hello, sir. Hello, Dimple. How are you? सर मैं भी मॉनिटरिंग के नाम कर रहा हूँ. Tools like App Dynamics and Dynatrace. That's good. Thank you. Hey, Dark Horse. How are you? Dark Rose. How are you? Good to see you. Ranjit from Andhra. Hey, Ranjit. Okay, let me share the link so that you guys can join. Join the live. Okay. सर डीएसए करने का मन नहीं करता, टेंशन हो रही है एआई की. रोहित join the live chat, then let's talk. Neeraj, Louisiana. Hey Neeraj, good to see you. Sir, give practical approach regarding career gap above 8 years. James, join the chat. I've just put the link here. Join it and then we'll talk. Hello, Dark Rose. How are you doing? Good to see you. This is Gamer Weber from Nasik. Hi, Weber. Shaktiman ji. Sat Sri Akal, sir ji. Sat Sri Akal from Mumbai. Which domain and subniche should you assess someone who wants to enter future and hyping job? ये शक्तिमान मैं questions यहाँ नहीं लूँगा यार. Join the link, then we'll talk. Okay. Oh, Nanki, thank you. Thank you so much. Good to see you, Nanki. Okay. All right, guys, you can join this. Join the stream here. Okay. All right. Switch on your cameras and then I'll invite you into the stream, okay? All right. Just give me 1 minute. थोड़ा setting करता हूँ. Okay. Let's see. Okay, lot of people joining in. Guys, switch on your camera. Only then I'll log you in. Okay? Without camera, I'm not talking to anybody. You know the rules. Okay. KNA Chaturvedi, how are you doing? I'm doing very good. Thank you. If you're trying to join now, the studio is full. We already have 10 people. So join in after 10 minutes. As we talk to some people, they'll move on and then you can join. Okay? Okay. Hi, Chetan. How are you? Hi, sir. Am I audible? Yes, very much. Sir, my name is Chetan and currently I'm a second year student. And yesterday I commented on your GPT-5 video that
Chetan, you're Uh, on mute now. yes, sir. Yesterday I commented on your GPT-5 video that you are talking about the full stack development and how web apps are being created so fast now, like just Mm-hmm. by a prompt, and we don't need any developers. Like you didn't tell that, but I think that we don't need developers now. Maybe not now, maybe now next 4 to 5 years. So Hmm. currently, I'll be entering my second year in my next month. Hmm. So in my first year, I was trying to get into development, like trying to contribute to open source, but I wasted a lot of time not doing anything efficient and just spent time, and my first year was over. So I was just thinking to learn Golang to get into DevOps at least. That looks like a good stream, and mostly it won't be affected by AI according to me at least. So I thought DevOps may be a good chance. So I started learning Golang. So just I wanted to know whether like will developers need, or maybe like do we need development background to get into DevOps anymore, like, or any operations or development operations background is enough? And I had one more question. So like I have seen many developers, like my friends, my seniors, like that, like they are talking about adopting DevOps practices in their daily life, like due to the AI boom, like that. So I was trying to know whether developers in future will adopt the DevOps practices, and will it become necessary for them to adopt it due to the AI boom? So that's my question. Okay, so two questions. Yes, sir. With is it so you've seen my video on GPT-5 which went out yesterday? Yes, sir, I Okay. did. All right. Okay. So what did you understand from that video, Chetan? So I think like maybe not the back end development, but the front end development is definitely at the risk of getting vanished now, Then why not backend? because like AI cannot do the front end is just like the code which the AI can write and it can display it, but the back end development requires, I don't know, but I think it requires some human efforts still. Like I'm not Okay. sure. I have no idea about that. Just my I'll opinion. I'll recommend you watch the video again carefully. What I said in that video is all the examples that people are showing of creating apps on ChatGPT, it is mostly only front end applications. That is what people are showing, right? Simple app. You've seen the demos of some small games, Tetris, this that, right? It is all front end code, right? Which is being done decently well by AI now. After that, I said today it is not writing that much backend code. Maybe after 6 months, 1 year, today we are sitting at GPT-5, maybe GPT-7, 8, it'll write backend also. What is the big deal? Right? If it can write Node.js, why can't it write Java? What is the big deal? Right? That is what I said. I also said that, however, what you are seeing are smaller applications. An enterprise application at a large scale, which is running into thousands and millions of users, those kind of applications, they require a whole lot more than just writing code. It is about deploying it correctly, it is about security, it is about scaling it, it is about 100 different things which today AI is not able to do. Who knows after 3 years, 4 years, what will happen? Nobody knows, right? Like Yes, sir. 3 years back, we did not know one chat GPT will come and disturb everything. Who Yes, knew? sir. So, what will happen in chat GPT 35? Who knows? Yes, sir. Nobody knows. That is what the context of that video was, right? Now, to Yes, your sir. question, फ्रंट एंड में पूरा एआई आ गया है, अभी मैं गोलैंग सीख लूं, अरे तो गोलैंग में नहीं आएगा क्या एआई? What is so different in golang that you will think that chat gpt cannot write golang? Right? So the question is not what should I learn that AI cannot do. That's the wrong way to look at it. The right way to look at it is whatever I am doing, A, am I very good at it? B, can I use AI to become better at it? And C,
If you take away AI from me, can I still be good at it? That is how you approach things. Because AI will automatically enter everything. If not today, after 2 years, after 3 years, फिर क्या करोगे? So like, Right? then what's your advice on that, sir? That is what I just said. You cannot find something where AI will not enter. It is impossible. So instead of fighting it, today, if you can write something in half an hour, 1 hour, first be very good without AI. That without AI, you should be able to write good quality code. Second, learn how to use AI so that your efficiency becomes better. So don't fight it. You have to embrace it and learn AI and get better at it. There is no point fighting it, right? And thirdly, large enterprises, within that, AI penetration will take time. It is not going to happen tomorrow, day after, in 2 years, right? So don't worry unnecessarily about watching these kind of videos. Do what you're doing and get very good at what you're doing. And learn AI and use cursor, replit, whatever everybody else is using. You also use. What's the problem? Yeah, makes sense? Yes, sir. Okay. Thanks, Chetan. Hi, Sudhir. Good to see you. Hey Saminder, just I just wanted to noticed. join. Uh Just huh. wanted to join and no, just want to hear about the new guys what they have questions. So I don't have any question, just I want to listen them. So that's why I No, joined. no, Maybe you don't have questions. You bloody well not have any questions now. that I will But you ask. give answers now. Do you have 15-20 minutes? Yeah, Can yeah, you stay? yeah, yeah. Okay, then I want you to answer some questions then. Sure, sure. I will try. Okay. Yeah, yeah. Why don't you give a little bit about your background? Who you are, what you do, little bit. Sure, sure. So I've started my career around 2011. So that time I joined as a developer in some IT company, and I was hardcore developer. I worked in the Visual Basics, SQL Server, .NET, then advanced MVC, and some other front end and back end related technologies. After 6 year, later that I got chance to work as a DevOps engineer. So I directly worked with the Microsoft, and there I worked in the Azure cloud. I done a lot of deployment related work, infrastructure related work, monitorings, and after that I got different role, like in same umbrella, like site reliability engineering, and AWS. I got chance to work in AWS DevOps. So entire 14 years, around 8 years I was in the DevOps, and 6 years in the development. So yeah, this is my complete journey, and I worked in different client, different environments. So what I'm thinking now, once AI comes, so things are getting faster nowadays. So as someone is asked just before, he's worried about what, once AI comes. So I, as you mentioned, like uh, whatever you have to be very expert on that one, and you can leverage that AI features which is coming into the market. And once you are the expert, even though if sometimes AI is not there, you can do that by yourself. So that is the key. I think people should know about that. And I'm also following same. Before taking help from the AI, I just do my analysis, and whatever the traditional approach I was doing that time, writing that logics, because building the logic is very important key in our IT field. So I keep doing same things, and I'm thinking how can I take more advantage in the AI, whatever that feature is giving, more than that I can do faster way. And yeah, so this is the things going on. Okay, cool. Yeah. All right, so let's go. Shaktiman, go ahead. What's your question? नाम बड़ा सही है यार, Yeah, बाकी तो ठीक है. no, that's not Yes. my real name. अरे यार, you disappointed me. Come on.
I just use it for my social media. That is not the real name. Okay, okay, So fair yeah, enough. Go ahead. my real name is Satish. Okay. Yeah. So my question was the same that I mentioned over there. I just wanted, so I was into CS, not the computer science, but company secretary. And actually, yeah, I've left in the third year. I completed two stages and I left in the third year. And I'm, switching to data science. So yeah, so I just wanted to, know more about it as such, whether, I mean, it is a booming field, AI and machine learning, and I switched for the reason that, it is a booming field, but also because of the fact that it has a lot of statistics and math. So that is something I always liked and I was good at it. So that was one reason, and the other thing is obviously it is a booming field, and it is something which is like wherein I can enter more easily than the other tech fields that are out there, and Mm-hmm. this also What's gives your me a chance. What's your question? Sorry. What's your question? Yeah, so the question was this only that whether it is the right field for me or not. Like in terms of that, I um, I can get into a job, a good paying job in a short span of time. Like it should not take a long time. I've been doing this for last 3 to 4 months. So Hmm. that is one thing, and the other was that is there a sub niche within this which I could focus on. Okay. So let me understand what you said. You said you were doing company secretary. You did that Yes. for a while, 2 years, and then you Yes. decided to change your stream, right? You Yes. started learning, and you've always been infatuated by maths, numbers, data. You like that kind of thing. So you Yes. decided to move into data science, Yes. right? Now, are you Yes. learning on your own, or have you joined some courses? So I've just joined a course from Krishna. That's an online course in Udemy, Okay, and Udemy yeah, course. it has Okay, been 2 to 3 months. Yeah. fair. And you've been doing that for 3, 4 months now, Yes. Yes. right? Yes. I've Now, started a bit slow, but yes, I'm. that's fine. And what is the goal? How long do you want to learn before you start applying for jobs? So like I first of all, I just want to complete that course, have at least Mhm. a few projects which are meaningful, and then Okay. I want to start with an internship and then maybe look for a job. When? When? That's my question. We are sitting beginning Yeah. of August. When do you want to Yes. start applying for internships? So I planned that at least by the end of October I should have an internship. End of Um, October, you should have an internship, yeah. which Yeah. means early October you will start applying, Yes. right? Yes. So if you start applying in October, end of October, you should have something, or at least you will know that you know they are asking for these five things. Out of these five, I know these two, three. These one or two are a little weak, so I need to put some more efforts in that, right? Yes. Yes. Then you've answered your question or your own, my friend, right? Only one way to find out, na? Yes. Abdek, you've taken such a big decision. You've left company secretary. You have started learning it. How does my opinion matter? If I tell you बकवास है छोड़ देगा नहीं छोड़ेगा ना I mean, like नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, because I exactly my know that point. आपको नहीं मिलेगा. Yes. नहीं see, you asked me, is it good for me? Who am I to tell you is it good for you or not? है ना? Okay. On the basis of 3 minutes of discussion, I cannot tell you if it is good or bad, and I should not be telling you also. You should not be listening to me also. Okay. Unfair है ना? Yes. खुद सोचना. Argument sake, I can say no, it is very good, it is fantastic for you. Does it mean anything? No. I mean,
in some sense it does. Like it will act as a moral booster for me. It But will help me. what I Yeah. what I say has got no bearing, has got no logic to it. Right? Why am I saying that? See, understand what I'm trying to tell you. I'm trying Yes. to tell you, you have made a career pivot, right? Yes. It has only been 3-4 months. Yes. Have confidence in yourself and stick with it. If it Uh, works, it and works. If it doesn't work, figure something out. yes, I should. Understand what I'm And trying to like tell you. I wanted to get the answer of that second question as well. That whether it has a sub niche which I could focus on given my abilities and interests. भैया वो अपने आप आ जाएगा ना. First get your Okay. internship na. Sub niches Yes. come later on, right? First get an entry, then you'll figure out sub niche. That will come later on. Don't worry about that for now. Your first goal should be to get an internship. Once you crack Yes. an internship, your second goal should be make sure that same company hires you. Okay. उसके बाद देखेंगे niche विच we'll figure it out later. Sure. ठीक है? Have Yes. confidence Yes. on what yourself. Whatever you're doing is great. Keep at it. If it doesn't work, Yes. figure out. Okay? Sure. Yes. All right. Ji. Thanks, mate. Yeah, thank Cheers. you. Thank you. Thank you so much. Bye. Hey, Valron, how are you? Hi, sir. I'm good. I'm good. Uh, Good to see Firstly, you. yeah, same here, sir. Finally, great to talk to you directly. Thanks, yeah. Uh, yeah. Firstly, thank you so much for your videos. Like they've inspired me to start my learn and public journey. So that really helped. Coming to my question, so I'm currently a full stack dev at SAS in Mumbai. So I joined via campus placements, and I've been here for like 1.5 years. Hmm. So I wanted some advice regarding uh, my career, like the point at which I'm in now. So for the last year, I performed pretty well and stuff, but like I still got like a low increment and that sort of thing. Hmm. Uh, so when I asked about what could I do better, so they said ki if I take more responsibility, like mentoring, ownership, and that kind of stuff, so then by next year they'll give a good hike if I meet those KPIs and everything, which is fine. Okay. But a little bit of context. So during placements also they had like initially promised us XCTC, and after we cleared the interviews and all, they reduced it by like 25%, citing that we don't have experience and stuff. Hmm. Uh, Besides that, so like after I joined also, my team lead left in like 2 or 3 months, and ever Hmm. since then, we junior engineers, by junior I mean like probably 1 year or less of experience, we've Hmm. been managing things over here. So even now, like most of my colleagues also have switched. So my question Okay. is whether I should commit fully here and like give it my best, guess since I already have like 1.5 years experience, or like prepare for a switch. Okay. How has your learning curve been so far? Pretty great actually, because anything that we have to figure out, it's all on our own. So there's a lot of own research in that sense. So growth has Okay. been well, I would say. And you're learning good new things also? Yeah, yeah. So like technologies, and there's like freedom to choose what you want to work on also. Yeah. Okay. And how's the work environment? It was hybrid, and so that Maybe was a not that. Overall, is it too pressurized? Can you take some breaks? Is it uh, manageable? Too stressful? That kind. in my team it's really good. Like there is no micromanagement as such. Then stay back, yeah. If you're learning, if you're enjoying the work, if the culture is good, then you have to have a nice talk with your current boss, right? An open conversation and say, hey, I didn't get a good increment last time. What am I expected to do so that I can get a decent increment now? You tell Yeah. me 3 things that I'm supposed to do that will make sure that I get a good raise. Have an honest conversation. Okay. And Okay. every quarter, go to him or her and say, hey, you asked me to do this.
This is my plan. This is how I'm trying to make it up. Okay, Mm. but if you like the work, it is good. This, see, sometimes you will get an increment, sometimes you will not get an increment. These kind of things will keep happening, right? And sometimes it is on you, sometimes it is on the company. There are 100 things to decide an increment. But if you like the work, I would say stick back for some time, maybe an year or so, learn, get more expertise, so that your next increment is sizable then in your next organization. No point taking a Okay. 10, 15, 20% increment. Aim for 100% more. Yes, sir. But that will come when your expertise, your experience is at the next level, Mm. right? And Got it. छोटा मोटा होता रहता है यार. People will get increment, they will buy their first cars, they will book their first house. You will not do it now, you will do it 2 years later. It is okay, it doesn't matter. Eventually everybody reaches there, right? So Yes. that would be my thing. Okay. Make Thank sense? you so much, sir. Yeah. Thanks. Yeah. Okay. Hi Imran, how are you? हेलो सर, Imran आई एम गुड, sahab, हाउ आर यू डूइंग? क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। वैसे क्यूब कौन से आया था वापस? Good यार. यस, Sorry? मैं कह रहा अभी क्यूब कौन से आया था बस वापस। हाँ, I wanted to ask about that. Tell us a little bit about your experience at CubeCon. माय एक्सपीरियंस, एम आई ऑडिबल? इज माय ऑडियो गुड? It's a little नया माइक लिया low. मैंने। लिटिल लो, लेट मी टर्न ऑफ द ऑटो माइक। वेट, इज इट फाइन नाउ? इज इट गुड? Yeah, much better. Much better. Yeah. आई थिंक गेन वाज लो ऑन द माइक, सो Okay. Yeah, so my experience was good. Like, it was not better than the Delhi one. Like, in December, it happened in Delhi for the first time. So the venue was quite like small, and everything was really congested. But in terms of sessions, there were more sessions, and much more new technologies, and there were more people as well. So काफ़ी यूट्यूबर्स भी थे जो भी टेक कंटेंट बना रहे हैं, तो उनके साथ मिलके काफ़ी अच्छा लगा. काफ़ी और लोग मिले, काफ़ी लाइक CTO CEOs वगैरह भी मिले. लाइक माय कंपनीज डायरेक्टर वाज आल्सो देयर, सो उनसे Oh, मिलके nice. बहुत अच्छा लगा. या You met them for the first अच्छा time, था. na? Yes, yes, I met him for the first time. We had a good conversation. Good. He said he gave me some guidance and some tips, and थोड़ा बताया कि किन लोगों को reach out करूँ उनके through. तो I'll follow that. And then उसके बाद डिजिटल ओशन का भी एक मीटअप था, लाइक आफ्टर पार्टी, वो भी अच्छी थी. उससे भी काफ़ी लोगों को Okay. मिला मैं. लाइक इट वाज स्मॉल मीटअप, बट आई थिंक स्मॉल मीटअप्स आर मच बेटर. ज़्यादा अच्छे Yeah. कॉन्वर्सेशन हो पाती है. तो या इट वाज Yeah. ओवरऑल इट वाज ग्रेट. अच्छा था. नेक्स्ट वन विल बी इन मुंबई, तो आपके पास ही होगा होपफुली. नेक्स्ट वन में आपसे मिल हाँ, रहा हूँ हाँ. मैं. Mumbai कब है? It will be in June 2026. June next year. Yeah, Okay. next year. Yes. Okay. Cool. Good. All right. Let's see. बाकी इसमें कैमरा वगैरह को मैंने नया सेटअप बनाया था. आई वुड लव योर रिव्यू. ये डेस्क चेंज हुआ है क्या? पहले वो लोकेशन नहीं है? नहीं, डेस्क पे रखा हुआ है ना सब. डेस्क तो वही, यहाँ लोकेशन वगैरह चेंज हुई है बिकॉज मैंने पूरा रूम ही अलग अच्छा. कर दिया ना. एक सेपरेट रूम में पूरा सेटअप बना दिया. ओके. तेरा ना लाइट का पीछे रिफ्लेक्शन आ रहा है. हाँ, वो मैं करूँगा. इसका थोड़ा पीछे टाइल्स है हाँ, ना. I think there's a glass in the back. टाइल्स it's है, टाइल्स तो reflecting. वो रिफ्लेक्ट करती है. ओ, I'll fix it. टाइल्स है. साफ है बहुत टाइल्स. Yes, so I'll fix कमरा it. साफ. अरे Yeah, बढ़िया. तो वीडियोस Okay. वगैरह में सही रहेगा. मैं अभी वीडियोस बनाना हाँ. स्टार्ट करूँगा तो. Okay, let's go next person. Dhavnil. Did I Yes, pronounce that sir. correct? Yes, sir. Dhwani leads. ध्वनिल. अरे बाप रे, क्या मतलब है यार ध्वनिल का? ध्वनि से है क्या कुछ? No, sir. It's in Gujarati. I'm a Gujarati, so it's like a big flower, you can say. बिग फ्लावर. अरे सही. बोलिए गुलाब सिंह. Actually, I need your guidance. I have हाँ. completed my diploma in IT with 8.29 CGPA, and now I am in BTech second year. And I Okay. decided to give CAT for 2027 as my coding is not that much great. So how should I, मतलब आपको पता ही है कि IIMs का वो जो शॉर्ट क्राइटेरिया होता है, इट्स वेरी टफ.
as a being Hmm. gems a general engineer male, तो आई हैव टू स्कोर 99.9 प्लस, तो ताकि वो मेरा रेज्यूमे देखे भी। एंड मुझे अपना रेज्यूमे भी ऐसा बनाना होता है कि कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर, ऑलराउंडर जैसा। और उसके साथ Hmm. अगर नहीं हुआ मेरा कैट में, तो एटलीस्ट आई शुड बिल्ड अ प्रोफाइल फ्रॉम नाउ सेल्फ ओनली, कि अगर वो नहीं तो जॉब तो लग ही जाए। तो मतलब Hmm. समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बोथ में दोनों एक साथ करूँ, दोनों में मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मतलब। दोनों मतलब? सर या तो मैं पूरा पूरा अपना सेकंड ईयर से ही करियर फोकस हो जाऊं, एक पर्टिकुलर थिंग में ही एकदम डीप में चला जाऊं, या तो So फिर you're in the कैट दूं। second year of engineering now, ये सर right? वो भी चालू हुआ है 14 अगस्त से। अच्छा, ठीक है। जुलाई जुलाई सॉरी 14th फोर्टीन August जुलाई है, कंफ्यूज मत करो। ओके, ठीक है। तो योर क्वेश्चन इज, should I start preparing for CAT also? Is that the question? मतलब कैट, सी आई वाज गिविंग कैट बिकॉज मेरा कोडिंग वीक था। एंड यू आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन मे बी, इसलिए मतलब आप समझ रहे हो, कैट में इंडिया, आई मतलब मैंने वो भी रिसर्च किया कि मैं फॉरेन में कर लूं। बट फॉरेन में प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो तब वहां पे भी जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब या तो आपका पे कम होगा या तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी पहली बात तो। इसलिए फिर इंडिया Hmm. में करने गया, तो इसमें तो बहुत ही है कि भाई आपको अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, वो 999, या तो यू शुड समथिंग कि आपने नेशन को रिप्रेजेंट किया, या नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, एंड वो भी नहीं डाइवर्सिफाई है, होना चाहिए। अरे नहीं वो सर, भी नहीं ट्राई है। करूंगा ये, वो 3 साल में सर कर दूंगा, पर्सपेक्ट। अभी तो सर कुछ नहीं है, यू कैन से लाइक, इसलिए ओके, आई एम, ये 3 साल मतलब गोल्डन ईयर्स है, यू कैन से कि मतलब फ्रूटफुल वे में मैं अपना निकाल पाऊँ, या तो मैं इस टेक फील्ड में जाऊं, या तो यू नो इसलिए थोड़ा वो करियर टेंशन भी है सर, एक तो एआई आ गया है। एक तो एआई भी आ गया है। हाँ सर। ओके, फेयर इनफ। सुधीर, एनी आइडिया? आफ्टर दैट इमरान, आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन, क्या करे बंदा? सुधीर बाबू, आउट ऑफ सिलेबस? यू आर ऑन म्यूट, सुधीर। अगर आपसे बेहतर कौन बता सकता है? अरे मैं तो बोलूंगा ही, तुम भी तो कोशिश करो। मैं एक्चुअल में थोड़ा पीछे चला गया था, क्वेश्चन सुना नहीं इनका, धविन का। So his question is, he's in the second year of engineering, हाँ हाँ। okay, and is not neither very good nor very interested in computer science and programming, more specifically programming. ठीक है, लेकिन अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले ली है, सेकेंड ईयर में है बंदा। सेकेंड ऑप्शन इज इंजीनियरिंग के बाद एमबीए कर लो, right? But then if when he figured out, there also it seems very tough because 99.99 percentile and this extracurricular, that also looks very tough. So his question is, I have 2 years, second year has started now, so 3 years basically, second, third, fourth year. What should I do now so that by the time I clear my engineering, either I get into CAT, which will set my focus, give me a good job? What should I do? Or should I leave CAT, focus on this, but programming समझ नहीं आती है, मन नहीं करता है, तो क्या करूं? That's the question. और क्या अच्छा लगता है धविन आपको, अदर देन ओए होए, पढ़ाई के अलावा, और क्या किस चीज में इंटरेस्ट है आपका? सर स्टैंड अप अच्छा करता हूँ, मतलब अच्छा। पर वो करियर घर वाले नहीं मानेंगे ना, इसलिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। पैशन है तो कर सकते हो यार, ऐसा क्या है, आजकल वो सर भी क्या लोग कंप्लीटली अच्छे। अग्री, बीइंग गुजराती, दे विल या तो सैलरी स्लिप मांगेगे, या तो धंधे का मांगेगी कि तू ये दोनों में से कुछ कर, ये थर्ड मत लेके आ। ठीक है, उनको बोलूंगा, उनको टेंशन आ जाएगा, बीपी की गोली चालू हो जाएंगी, इसलिए हैव टू फिगर इट माई आउट, मतलब खुद ही देखना पड़ेगा पूरा पूरा। इसलिए ये थोड़ा, मतलब मैंने बहुत मतलब मेल्स किए सबको, अपने लिंक्डइन प्रॉपर किया, आईएम्स वाले से के साथ कनेक्ट हुआ, उनसे गाइडेंस ली, प्रोडक्ट मैनेजर, मुझे स्पेसिफिकली ब्रॉडबैंड में ही जाना था, तो मैं उनसे कनेक्ट हुआ। तो वो बोलते तू एमबीए ही मत कर, मैं बोला ऐसा तो मत बोलो यार, मैंने बोला यही तो लाइफलाइन लेके चल रहा हूँ। इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, इसलिए मतलब ये 3 साल में अच्छा तो कुछ निकलू, ऐसे घूम के देखूं तो अच्छा ही गया ऐसा दिखे, वरना लास्ट में तो सर क्या करूंगा, नहीं एमबीए होगा, नहीं इंजीनियरिंग होगी, मतलब डिग्री आ जाएगी बट नॉट। वो एक मूवी थी ना, Imran, थ्री इडियट्स, देखो उसको फिर से, three शायद कुछ idiot फिर निकल से जाए। बोलो।
सर आई वुड सजेस्ट गो फॉर बीटेक, साथ में कॉमेडी फॉलो करो भाई। लाइक 3 years इज अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब को कॉमेडी भी आप कर सकते हो अगर आप करते रहोगे। तो आई वुड से टेक अच्छे से करो और वो अच्छे से करो। एमबीए इज लाइक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उस इन दोनों के साथ उसमें सर मेहनत कंपैरिजन करने में। के लिए तो मैं दोनों में तैयार हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मेहनत, कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, 8-8 10-10 घंटे सारे मजे छोड़ने पड़ेंगे। बट द पार्ट की कौन सा मतलब टेक फील्ड या टेक स्टैक चूज करूँ जो तब भी मतलब अवेलेबल होगा, या तो उसमें जॉब्स होगी। क्योंकि अभी का सिनेरियो देख रहा हूँ तो अपना हो ही नहीं लगेगा। मतलब मुझे तो लग रहा है टेक कि में जॉब्स वो है भाई, फ्रंट अगर डेस्क आप पे। अच्छे से करोगे है क्यों नहीं। टेक में अच्छा, रहेगी आगे भी, मतलब तो एआई गाइडेंस कोई नहीं थी जॉब ना नहीं ले सर। रहा है। एआई नहीं कोई नहीं, जॉब नहीं ले रहा मैंने है। सर की वीडियो देखी थी कि वो काम इजी कर रहा है, बट एट द एंड ह्यूमन को ही करना हाँ है ना, कि जहाँ पे अटकेगा तो ह्यूमन ही हाँ। मतलब हेल्प करे, सॉल्व करेगा। तो वही कि कौन सा भी टेक स्टैक पकड़ू तो वो अच्छे से मेरा हो जाएगा ऐसा। अभी तो 1 साल है, से ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट टेक स्टैक, 3 3 महीने दो, किस में मज़ा आ रहा है आपको, देन डिसाइड करो एंड देन फिर 2 साल थोड़ा उसमें इंटरेस्ट हंड्रेड जगाने की परसेंट दो। कोशिश करो, अभी टाइम है हाँ तुम्हारे पास। सर एक डिप्लोमा आईटी किया था। स- सारी लैंग्वेजेस 3-3 महीने की थी। उसमें से ऐसा भी एक बार भी नहीं हुआ कि सेम गया चलो ये लैंग्वेज फिर से करते हैं। मतलब यू जावा, एडवांस जावा, पाइथन, डीएसए, एमएल, क्लाउड, मतलब मतलब डिप्लोमा ठीक से पढ़ा था तो उसमें तो आ ही रहा था कि ये तो नहीं होगा, तो भी इंजीनियरिंग तो करनी थी इसलिए। भाई, ओपन ओपन जो वो थे ना स्पॉट्स, कॉमेडी शोज करना स्टार्ट करो, थोड़ा अपना कंटेंट पॉलिश करो साथ साथ हाँ वर्क सर। से। रील उल भी बनाते ओके हो धनिल, क्या? आई सॉरी, हाँ क्या कह रहे थे इमरान? अरे कहाँ गया? मैं ये कह रहा था कि कहाँ गया। अरे बंदे गया। मैं तो डिस्कनेक्ट हो ये कह गया। रहा था कि ये बीटेक के कम साथ बैक। साथ कॉमेडी करना इज मच बेटर सर ऑप्शन। क्योंकि अगर उसमें वो अच्छा है और पैशनेट है तो कॉमेडी में बहुत देखो आगे निकल करना सकता है चाहते हैं आदमी। बट शायद वो डर रहे अपने घर वालों से, इसी वजह से। घर वालों को एक बार हाँ पैसा ही इज दिखेगा बैक। आते हुए फिर तो मान ही जाएंगे ना, वो तो हर कॉमेडियन को मना करते हैं घर वाले। हाँ, वो तो आई वही थिंक है, कुछ ही हैज़ टू सर्किल ओके। गिव हिज टू हंड्रेड प्रोफेशनल। परसेंट हाँ, जहाँ पैसा आते हुए दिखेगा घर वालों को फिर वो तो कहेंगे ही अच्छा ठीक है भाई, फेमस भी होगा, सर पैसा भी आएगा तो फिर तो बोला ठीक है। ना। शुरू में मत बताओ धवल, थोड़ा इस पे कुछ तो पालो फिर बताना, तो मे बी वो एक्सेप्ट कर ले, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, अभी शुरू शुरू में में छुप कोई छुप भी के नहीं। करना सर पड़ेगा। चांसेस आप अपने, नहीं नहीं सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने पेरेंट्स को जानते हो कि ये इसमें ही अलाउ करेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, कि ये इधर तक ही अलाउड होगा, उससे ज्यादा तो मतलब ठीक है पैशन के लिए हो सकता है, बट नॉट फॉर योर इनकम। दे वुड सजेस्ट कि चुटकुले सुनाएगा ऐसे गुजर में हंसा वाना तो एम आई वुड ट्राई, बट तो भी बैकअप के लिए कुछ तो हो सर ऐसा। बैकअप के लिए बीटेक होगी ना भाई। ओके Dhanil, I'll वो let me तो ask you 2 3 questions. Okay. ये सर। So now you're in the second year of engineering. It has just started, right? यस सर। What happens if you pass out from your engineering and you don't have a job and you don't get into a good MBA college also? What happens then? फर्स्ट कहता हूँ मैं कोर्स को ऐसा ढूंढूंगा जिससे मुझे स्टार्टिंग कोई जॉब मिल जाएगी। Hmm. एंड सेकंड अपस्किलिंग, देन पूरा पूरा फोकस अपस्किलिंग में चला जाएगा। बिकॉज सी कैट क्वेश्चन में नहीं समझे वो, आप। क्वेश्चन नहीं समझे आप। आई नो मैं आपको ये आपने ऐसा पूछ रहा बोला हूँ, मैं ये नहीं कि पूछ रहा हूँ आप कैट, क्या करोगे उसके बाद। मैं पूछ रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा। नहीं नगली नौकरी और कैट में भी नहीं हुआ, कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिला, कुछ तो बेकार कॉलेज मिल रहा है, क्या होगा? घर वाले निकाल देंगे घर से, नहीं वो तो नहीं निकालेंगे। डांट मारेंगे। नहीं अगर उन्होंने वो नहीं, फादर ऐसे नहीं है कि वो ऐसे बोलेंगे कि टाइम बिगाड़ा। अगर मेहनत करूंगा तो वो कभी नहीं ऐसा टॉन्ट करेंगे। अज्यूम करो मेहनत की ना, आई एम नॉट सेइंग हाँ, गड़बड़ की तुमने, आई एम सेइंग नहीं नहीं, मेहनत की आपने लेकिन नहीं हुआ, देन व्हाट हैपेंस? व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? डू आई यू वुड स्टे एट ट्राई होम अगर। राइट नाउ? डू यू हाँ स्टे सर। एट होम? सर आई डू कॉलेज इन माय सिटी बिकॉज कि मैं एमबीए की वो अच्छे से करूँ। जब कॉलेज में गया तो पता चला कि अब तो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। सो यही थोड़ा वो पॉइंट था कि जहाँ पे अभी करियर का वो थोड़ा टेंशन आ रहा था कि आगे क्या ऐसा। बिकॉज इधर प्लेसमेंट भी नहीं आ रहे हैं तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑफ कैंपस फॉर श्योर। ऑन कैंपस तो भूल ही जाओ।
इसलिए अभी से ही जितना हो सके उतना ट्राई कर रहा हूँ सर। मैं आपको एक एडवाइस दूं, मानोगे? हाँ सर, इसलिए तो है। YouTube के वीडियो देखने कम कर दो। ओके सर। I'll tell you why. Because 90% of your fear is coming from watching those videos, including some of mine. Right? वीडियो में हर चीज ट्रू नहीं होती है ना? You have to understand that, right? It is made for a certain reason, right? Sometimes the title and the thumbnail has to be negative. और बिकॉज क्लिकिंग पॉजिटिव है। पॉजिटिव डाल के मैंने बहुत ट्राई किया, कोई नहीं देख रहा था, मैंने भी नेगेटिव डालने शुरू कर दिए, क्या फर्क पड़ता है, राइट? यस सर। सो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना अप टू डेट रहने की कोई जरूरत नहीं है, और सब ज्ञान ही फेंक रहे हैं, है ना? तो दुनिया में कुछ नहीं हो चला। मैं 25 साल से काम कर रहा हूं, 2000 में पास आउट हुआ हूं, 25 साल हो गए हैं। कितने तूफान आए चले गए, हम वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं हो गया। एआई से कुछ नहीं हो जाने वाला, तेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीसीएस 12,000 लोग निकाल रहा है, हर साल निकालते हैं लोगों को, कुछ नया नहीं है। थोड़ा स्केल बड़ा है, 2-4 कंपनी ने एक साथ में निकाल दिया है, बाकी कुछ नहीं हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, calm the heck down, right? The whole world is not going bonkers. Cool down. Second, focus on one thing right now. You can't do engineering and worry about MBA, it will not work. Because the way things are headed, MBA by nature is more generic, right? They teach you how to become a good employee, they don't teach you how to set up businesses. Very few courses there are like that. I'm talking about in general in India, right? So now you are in tech, you've taken that choice, you've invested 1 year, focus on tech, do the best that you can. Your goal should be not 3 years, your goal should be in your 4th year. By the time your 4th year starts, you should be able to crack an internship off campus. If you're able to crack an internship off campus, which means you're on the right path. Focus on that. Okay? Whatever is happening in college is great. Don't worry. Create your own roadmap, start studying, start creating projects, start learning in public, and keep on doing comedy. What Imran also said, what Sudhir also said. Not to make money. That is a byproduct. But for your own mental sanity. यस सर। Because that gives you happiness. And who knows, एक वीडियो वायरल हो गया, कहीं से कहीं दुनिया बदल जाएगी. Nobody knows, right? श्योर सर। So I would say put pause on the MBA, right? Focus on your tech. Focus there. Your goal should be beginning of 4th year, you should have an internship. Once you have the internship, make sure those guys hire you. Your job is set. And keep doing stand up on the side. श्योर That सर। is what you should do. ठीक है? सर एक लास्ट डाउट है, मींस 2-3 डाउट्स। यू शेड नहीं, ask मतलब one question only. One question only. We have to talk ओके to other people also. सॉरी सर, हाँ. इंटर्नशिप इन लोक मींस इन माय सिटी और लाइक बिग एमएनसीज और वो कंपनीज में इंटर्नशिप लैंड करनी होगी। Wherever you can get the best one that you can get. ओके एंड सर सेकंड, टेक स्टैक एनीथिंग, मतलब उस कौन सा अभी चूज करना चाहिए ऐसा कुछ? जो अच्छा लगे, सर वो तो कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता. मतलब तो एक उठा सर ले, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठा ले कुछ भी. Get सर good at जावा that. जावा डीए से चलेगा मतलब? अरे शुरू तो कर यार, सर पढ़ किया तो मैंने सही. जावा जावा किया मैं सर, मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट भी किया था कॉलेज में। सी प्लस डेटा स्ट्रक्चर है तो वो तो कर ही रहा हूँ, साथ में अपना खुद का भी जावा कर रहा था कि कहाँ मतलब सिक्के उछल जाए, इसलिए मतलब। देख, एक जावा पे अटक के नहीं होगा, right? You'll have to learn other things. Even if you take Java, then you'll have to get good at Java, you'll have to learn Spring Boot, you'll have to learn other things also.
right? So it's not like one tech stack. Like, can I do Java only? No, you have to learn Java. You have to do a little bit of DevOps also. You should know cloud also. You should know a lot of these things, right? Sure, sir. अब Okay. लास्ट में एक Thank you जोक so सुना much. के जा अभी. एक जोक सुना अभी. Sir, अबे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक तो सुना है, कुछ तो सुना है यार. ऐसा क्या है? ठीक है सर, कैमरा ऑफ कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग बाहर घर पे आ गई ना तो डांटेंगे। चलो ठीक सर, है, अच्छा चल है, बंद अच्छा है, अच्छा है, आ जाए। कर. सर थोड़ा 18+ है, चलेगा? अरे हम सब बड़े ही हैं, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, सुना दे. मुझे रॉ मुझे रॉयल एनफील्ड की बाइक लेनी थी, तो पापा ने बोला ठीक है दिला दूंगा। हम शोरूम गए, सब देख के आ गए। तो मुझे लेने से पहले 3 कंडीशन दी कि तू भगाएगा नहीं, कोई क्लब ज्वाइन नहीं करेगा, और तू हाईवे पे नहीं जाएगा। तो मैंने ऐसा बोला कि शादी करवा रहे हो बट सेक्सी नहीं करवा रहे हो। तो थोड़ी और अभी मेहनत करो जावा पे. सर इसमें क्या है, ये परफॉर्मेंस था दोस्तों, मतलब 8-10 लोग के ग्रुप समझा, में तो अच्छा होता है, ये इधर आपने समझा. अचानक ही ऐसा। ठीक है. ओके, सर थैंक्स. थैंक यू सर। चलो भाई. Okay, guys. Whoever switches on the camera, I will talk to them. Without the camera, we don't talk. You guys know the rules. All right, Kartike. Hey, Kartike. Hello, good evening, sir. Sir, is there any Good evening. background noise? Because some event is going on. No, no, it's good. Go ahead. Sir, currently I am in the first semester of my college. So before coming, so I started learning HTML. Hello. Hmm. Uh-huh. Go So ahead. before coming, I started learning HTML. Then after joining the college, matlab they started with Python. So I got some distracted with that and a lot of other sub courses and all. He subjects daily 5 4 classes. So I didn't get time. Do not get time for doing HTML. So what should I do? Matlab, I should just start with the Python, and then from the next semester they will teach us Java. So should I go with Java? Matlab, start with Java and then can I drop the HTML thing for अबे now? HTML में क्या है यार? सर What मतलब is the big deal HTML in it? मतलब 90% कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद जब वो CSS और जावास्क्रिप्ट है सर, फिर कॉलेज का भी मतलब थोड़ा प्रेशर है सर, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि सर डेली 5 to 4 क्लासेस हो रहा है। what is your 7:20 ऐसा फिर question? फ्री होता हूँ सर। तो सर What कि is your मतलब मैं question? ड्रॉप करना सही है कि बाद में मतलब जावा प्लस DSS स्टार्ट कर दिया, फिर उसके क्या बाद HTML ड्रॉप मतलब करना सेकेंड सेम चाहिए? से हाँ मतलब वेब डेवलपमेंट आफ्टर मतलब DSA करना स्टार्ट कर दूँ। ये करना तो सब पड़ेगा ना, हाँ करना तो सब मेहनत तो पड़ेगा। करनी पड़ेगी. तो ऐसा कोई हाँ मेहनत तो करनी है सर, वो तो पता है तो अभी तेरे HTML CSS में यह हाल हो रहा है, तो आगे क्या होगा? सर। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ वो कार्यक्रम. दिक्कत नहीं है सर, टाइम सर प्रेशर बहुत आ रहा है स्टडीज का, पता नहीं क्यों। तो ले ले प्रेशर, कोई बात नहीं, क्या हो गया? सुधीर के बाइसेप होते थे बहुत बड़े बड़े, अब देख क्या हाल हो गया, पतला हो गया बेचारा प्रेशर ले लेके. प्रेशर तो आएगा ना, लेना प्रेशर, काम करना. क्या कितने चीज घंटे सोता सोच दिन रहे में? हो क्या? हाउ सर मेनी आवर्स डू यू सिक्स स्लीप? टू सिक्स एंड हाफ 6 to ज्यादा है 6 ना, and a कम कर half देना. कम कर दे, 4 घंटे कर दे, कुछ नहीं होगा. सॉरी सुधीर, यू वर सेइंग समथिंग. नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ किस चीज का प्रेशर आ रहा है इसको, या प्रेशर सर सही में है, मतलब ज्यादा सोच ओवर थिंकिंग कर। क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर उसके हाँ, बाद फिर क्विजेस भी ले रहे हैं हम स्टार्ट बाय स्टार्ट सर। अभी मतलब दस इसका बीस दिन ही HTML हुए का है कॉलेज जावा, स्टार्ट हुए। वो HTML का है जावा का है, किस मतलब चीज का सर क्लास मैंने जा रहा है? HTML स्टार्ट किया था कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। हाँ हाँ। फिर उसके बाद सर जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, फिर और चीज़ें भी होने लग गई, इवेंट्स वगैरह, फिर सर थोड़ा वो छूट ही गया। मतलब 10 दिन का ब्रेक आ गया था पढ़ने में। फिर वो ऐसा सर वो मन ही नहीं करा, फिर वो पाइथन स्टार्ट हो गया, फिर वही पढ़ने लग गया। अभी जो करंट चल रहा है तुम्हारा, लेट से जावा या पाइथन, उस पे फोकस करो, हाँ और HTML को थोड़ा हाँ कम टाइम दो,
क्योंकि HTML थोड़ा इजी रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, हाँ सर, वो आ हो गया, जाएगा। 90% हो गया हाँ तो फिर प्रेशर किस चीज का, अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सर। जो करंट मतलब क्लास चल रही है उस पर मतलब फोकस करो, उस पर सर टाइम ज्यादा मेरा स्पेंड करो। कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, अच्छा। तो उसमें मतलब सब्जेक्ट्स मतलब पांच सब्जेक्ट हैं, मतलब एक्सक्लूडिंग पाइथन। तो उसमें मतलब वो सब्जेक्ट का भी क्लासेस होता है, फिर उनका क्विजेस भी स्टार्ट होता है। अभी अगले हफ्ते से तो सर एग्जाम है। अरे अजय गुरु भी है, चल उनको बुलाता हूँ अभी। फिर मिलेगा जवाब ऐसा ना, HTML भी भूल जाएगा। गुरु भाई अच्छे से आंसर देंगे इसका, उन्हें बुलाओ। रुक 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 रुक, अरे गुरु जी आ गए। गुरु जी, हेलो गुरु। इसका जवाब आप दो जरा। अच्छा, आप ये बताइए कार्तिकेय जी, अगर सिर्फ HTML मालूम है आपको, हाँ ठीक सर, है, कुछ भी नहीं मालूम है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे क्वेश्चन तो पूछने दीजिए सर। हम्म, सिर्फ HTML होता है जो, हाँ इट्स इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? इट्स लाइक वियरिंग योर ट्राउजर्स। अब सिर्फ ट्राउजर पहन के तो पार्टी नहीं जा सकते ना, बनियान भी पहनना पड़ेगा, शर्ट भी पहनना पड़ेगा, कंघी भी करनी पड़ेगी, या और जूते शूज सॉक्स तो पहनना ही पड़ेगा। उसके बिना अगर आप पार्टी में जाओगे तो आपको बाहर डंडे मार के निकाल दिया जाएगा, मीन्स यू वोंट बी अटेंड। इट्स अ सिमिलर थिंग। जैसे किसी ने मुझे बोला, मैंने बोला कि मैं 25 साल से जावा कर रहा हूं, तो यू आर ओनली गुड एट जावा। उनको ये नहीं मालूम कि मैं किस किस में अच्छा हूं, राइट? कंपनीज पागल नहीं है मुझे करोड़ों में सैलरी देने के लिए, ठीक है? सो माई सजेशन इज थिंक फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। योर कस्टमर कैन बी योर एम्प्लॉयर और योर प्रोजेक्ट। सिर्फ HTML से तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। उसको होस्ट कहाँ करना है, कैसे डालना है, कैसे डिप्लॉय करना है, ये सब करने में टाइम लगेगा, और 3 महीने में कुछ नहीं होता, ठीक है? सो डोंट ओवर थिंक, डू समथिंग वेर यू कैन प्रूव समथिंग एंड देन मूव ऑन। ये हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया। फुल एक्सपर्ट तुमको जेम्स गॉसलिंग तो नहीं बनना है ऑब्वियसली। थोड़ा बहुत पढ़ो, उसका वेबसाइट बनाओ, ये किया वो किया, थोड़ा ऐड करो, थोड़ा ऐड करो, थोड़ा ऐड करो। फेलियर्स इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग। अगर तुम फेल नहीं हुए कहीं HTML में डिप्लॉय करने में, तो तुमने कुछ नहीं सीखा जिंदगी में, या? सो डोंट गो एंड वॉच सो मेनी सेक्सी वीडियोस, जीरो टू हीरो 1 घंटे में, जीरो टू हीरो एक सर घंटे वो में नहीं सब नहीं होता है। देखता मैं। हाँ, ठीक है। 20 साल होने के बाद भी मैं अपनी बीवी का हीरो नहीं बन पाया। अब शादियों के 20 साल हो गए मेरे, अभी भी गधा बुलाती है मुझे, अरे क्या गुरु, कर लूंगा? फोकस फोकस फोकस, फोकस ये कहीं और फोकस, चले जाएगा पॉडकास्ट। फोकस। हाँ ठीक है। Have some fun, learn, have some fun, find your passion, find your राजू रस्तोगी मत बनो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। इमरान को देखो, वो भी इसी से ही है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्या? सिर्फ उसने सिर्फ HTML पढ़ा था क्या? नहीं। सर अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है। तो क्या हुआ? तो कॉलेज स्टार्ट हुआ तो आप, यार सॉरी, मैं सर गंदी वही लैंग्वेज कह यूज रहा हूँ नहीं कि करता तो ब्रेक। मुझे फील अरे सर, सर आप, सर मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, फिर बीच में ब्रेक आ गया 10-15 दिन का। फिर उसमें मन ही नहीं तो हुआ क्या कि हुआ आगे कि भी शुरू कर दूं, फिर मैं पाइथन ही पढ़ता आपको गया। मैं बोलता हूँ, मैं बहुत लोगों को मालूम नहीं है, 12th के बाद मेरे घर में पैसा नहीं था मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे बड़ा भाई और मेरी बड़ी दीदी पढ़ाई कर रही थी। तो 12th के बाद मेरा 3 साल का गैप है। उस समय मैं फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है? 3 साल के बाद जब मेरी दीदी और बड़े भाई की एक एजुकेशन खत्म हुई और डैडी का बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ, तब उन्होंने मुझे नासिक लेके गया। बोले क्या करेगा? बोले कंप्यूटर साइंस। बोले 10th 12th में तो घटिया मार्क थे। बोले मैं करके दिखाऊंगा। I got 97% average in my computer science in all the 5 semesters. Sorry, 5 years. काम करो, डरो मत पहले, राइट? नाउ आई एम बेस्ड आउट ऑफ इंग्लैंड, मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है। सो स्टॉप बीइंग अफ्रेड। क्या होने वाला? अरे यार 10 दिन में तुम्हारा एक्सीडेंट होगी, तुम मर गए तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुमने क्या पढ़ाई की है। स्टॉप बीइंग अफ्रेड, ठीक है? Concentrate on studies, enjoy, have some fun,
find a girlfriend and have some fun as well, please. ठीक है, ठीक है? कार्तिक है? Okay. चलो, Okay, bye. thank All you. right. Thanks, man. Thank Bye. Okay. Satish, go ahead, please. हेलो गुड इवनिंग सर Good evening. सो एक्चुअली हम पहले भी कनेक्ट हुए थे सर बट लास्ट टाइम मेरा नेटवर्क इशू की वजह से मैं बात नहीं कर पाया तो Okay. एक्चुअली क्या है कि मैं ना जॉब करता हूँ माउंटस्टैक डेवलपर हूँ तो करीबन 1 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को And, मेरा जो स्किल बेस है वो सही है सर जो भी टास्क असाइन करते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे जो भी मैनेजर होते हैं जो भी टास्क असाइन करते हैं वो हम कर सकते हैं मतलब कर लेते हैं अच्छा से जस्ट लाइक एपी इंटीग्रेशन कर लेते हैं और थोड़ा कोडिंग लॉजिक भी सही है Satish, what's your question? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना अपने आप को फर्दर मूव ऑन करना मतलब फर्दर ग्रो करना चाहता हूँ जैसे कि अ, मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली कि कौन सा टेक स्टैक मैं आगे कैसे बढ़ूँ या और मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ तो मैं वो जानना चाहता हूँ सर एक्चुअली मैं क्या करने से सही होगा देखिए जैसे कि अब अब मार्केट में एआई ट्रेंड कर रहा है कि एआई की तरफ बढ़ूँ या फिर इसमें और भी डीपली जाऊँ या क्या करूँ तो बहुत सारे कंफ्यूजन मैं होते एक हैं आइडिया दूं सतीश सर, मैं एक आइडिया दूं। बोलिए सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके भर्ती हो जाओ, डेफिनेटली तुमको अच्छा जॉब मिल जाएगा। अब पढ़ने अब ऐसा नहीं हो सकता सर मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्यों क्यों? मतलब अ, मतलब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जैसे कि मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ रहा है तो उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं उठा रहा हूँ अभी ठीक है सर पेरेंट्स सर 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 सर, I'm going to be very blunt with you, okay? All these are excuses. You have 24 hours in a day. If you work for 10 hours, you take care of your sleep for 5 hours or 6 hours, whatever it may be. Yeah, yeah. हाँ जी You have lot many hours to improve yourself. Stop asking for help or spoon feeding from others. Savinder, Muhammad, or some people who have been very successful. One of my mentor is just 1 year finished. Yeah, he went to a company, became the intern. A CEO called him. 1 year later, he finished that intern, went to another one, became permanent. 6 months later, he quit the job and started his own company and is doing far better than now. So the thing is, it's all about taking a bit of risk and going out of your comfort zone. If you still remain in your comfort zone and taking care of your siblings and think that you cannot do yourself. For example, I'll give you a good feedback. Your mic is very bad indeed. Yeah, hardly people can hear you. Yeah, right? And look at your outlook, right? If I call you for an interview right now, chances are within 5 minutes I'll reject you. Yeah, your look, your professional, you're logged in from a bloody mobile. What yes does sir it say about you? That you are not a professional. First, act like a professional. so actually last time when I have logged in through my laptop so there I got an internet issue so that's why That's your avoiding problem. that issue That's your so problem. That's your problem, not my problem. Fix it. Invest in yourself. You don't get returns unless you just keep your money in your current account. You get nothing. Yeah. so If you yes just ask for other people to help you without you helping yourself, nothing will happen. You will just keep asking the same question in 6 years' time. Sorry, so Sudhir actually and Mohammed and Savinder. I had to be bloody brutal about it. That's why we no get sir you in the sir live. actually So Satish, let's wrap this up. Okay. See, you want to make progress, understood. You want to do better.
understand that also. The core message we are trying to tell you is that start investing in yourself, right? You know what you're doing today, you know what is better for you, you can find the answers yourself. You've joined this live, I think 2 or 3 weeks back also. Similar problems. Now also we can't hear you. The message that we are trying to give you is, dude, invest in yourself. Good quality mics are not expensive. Good quality internet connection is not expensive. Start from there, and you will automatically figure out what you need to do. Okay? Thanks, Satish. All right. Nick, go ahead, please. Hey, hi sir, how are you? Good, good, very good. करंटली मैं एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में वर्क कर रहा हूँ यूजिंग Mhm. टूल्स लाइक एप डायनेमिक्स एंड डायनेट्रेस. सो मैं अभी मतलब 3 साल से काम कर रहा हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे. तो मैं अभी मतलब मेरे को डेवॉप्स में लाइक वर्क करना है. तो मैंने एक कोर्स भी लगाया है, वो अभी खत्म हो गया, तो प्रोजेक्ट वगैरह भी चालू है उसके. लेकिन मेरे पूरा अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है ये एपीएम में, मॉनिटरिंग में. तो मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एज इंटरव्यू करूंगा प्रिपेयर, तो फिर मुझे एज अ पर मतलब एक्सपीरियंस मतलब जितना मैंने सुना है जितना कि डेवॉप में फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस ही मोस्टली लगते हैं. फ्रेशर को थोड़ा ये रहता है. तो फिर लेकिन मैं करता हूँ मतलब डेवऑप्स के जो भी टूल्स है वो भी सीख रहा हूँ. जैसे एनसिबल वगैरह ये सब टूल्स मॉनिटरिंग में भी हम लोग यूज करते हैं. जैसे कि जो एजेंट्स रहते हैं ना, वो उनको डिप्लॉय करने में हम लोग ऑटोमेशन करने के लिए यूज करते थे. तो वो शुरू करते वक्त मतलब बहुत अच्छा लगता है, या ऑटोमेशन हो या फिर जैसे टेराफॉर्म हो या फिर ओडब्ल्यूएस की कुछ सर्विसेज भी यूज करते हैं. तो फिर ये थोड़ा गाइडेंस चाहिए था कि कैसे माइग्रेट करना है मेरे को मतलब. तो आपके 2 क्वेश्चंस हैं. आप मॉनिटरिंग हाँ. फील्ड में हो, आपको डेवऑप्स में मूव करना है. योर क्वेश्चन इज हाउ यस. डू आई मूव, एंड द सेकंड क्वेश्चन हाँ. is there role for freshers in DevOps? These are the 2 questions, right? हाँ, मेरे को अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एज अ डेवऑप्स में तो मैं फ्रेशर ही रहूंगा ना, ऐसा Fresher, yeah, yeah, ये है. understood. Imran, do you want to take that question? Yes, I would say like कि पहली बात तो इनका मॉनिटरिंग में ही है, तो आई थिंक वो काम ही आएगा डेवॉप्स में, बिकॉज मॉनिटरिंग इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ डेवॉप्स और सारे टूल्स यस. बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसमें. तो वो एज अ फ्रेशर आप काउंट होगे भी ना, नहीं भी होगे, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड अगर आपका मैं वो आंसर करूँ कि फ्रेशर को वो जॉब दे लेते हैं, तो वो ज़रूर लेते हैं भाई. मैं भी फ्रेशर था और मैं तो बिल्कुल ही नॉन टेक से था. आई वाज फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो आप अच्छे से प्रिपेयर एक्चुअली करो, मैं अपनी भी जर्नी सिविल को अच्छे से इंजीनियर बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट से करो. हूँ. तो अच्छा है, वो ईजिली हो जाएगा. द पॉइंट इज़ आप सब कुछ अच्छे से पैकेज करो खुद को, कि एटलीस्ट इंटरव्यूअर को दिखे तो कि हाँ आप इतने कैपेबल हो. आपकी प्रोफाइल पे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे से वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए. उन सब चीज़ों पे फोकस करो. लाइक स्किल्स तो आपके पास हैं ही, तो वो हो जाएगा. बहुत ईजी है. इट्स नॉट दैट हार्ड टू गेट अ जॉब इन डेवऑप्स एज अ फ्रेशर, आई राइट. वुड से. तो मैं जब से कर रहा था ना ये मॉनिटरिंग में, मेरे को मतलब मतलब करता तो हूँ मैं भी, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता था मेरे को. पहले से ऑटोमेशन जैसे कि एंसिबल ऑटोमेशन हो या फिर जैसे जेंकिंस टूल वगैरह, ये सब इनमें थोड़ा अच्छा लगता था. जब भी मैं कोई टास्क छोटा या फिर कोई प्रोजेक्ट करता तो बहुत सही रहता था. मतलब मजा आ जाता था ऐसे करने में सब ऑटोमेशन. तो फिर वही था. लेकिन कैसा अभी जिधर मैं काम करता हूँ उधर भी इतना मतलब इन्वायरमेंट इतना ये नहीं है, थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट ज्यादा है. पहले मैं L2 में करता था, लेकिन अभी डायनेट्रिक्स में शिफ्ट हुआ है डायनेमिक्स से. तो फिर इधर अभी L1 में है काम कर रहा हूँ. तो फिर इसलिए अभी मतलब मेरे को चेंज करना है एज मतलब जितना जल्दी ये कर निक सको जी, उतना. एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछूं. यस यस. आप ऑफिस में कितने घंटे काम करते हो, टिपिकल एवरेज? 9. 9 आवर्स, हाँ. हाँ. बाकी क्या करते हो? बाकी अभी कैसे अभी शिफ्ट में हो तो फिर बाकी जितना अभी नाइट में रहे, नाइट शिफ्ट रहेगी तो दूसरे दिन में मतलब सोकर उठने में टाइम मिल जाता है, तो वो टाइम पे पढ़ाई करता हूँ मैं जो भी मैं टूल्स हाँ, तो हाँ, करना चाह पढ़ाई रहा हूँ. करते हो. हाँ, गुड. आपने जो बोला परफेक्ट बोला, पढ़ाई करते हो. उस पढ़ाई को कहीं इम्प्लीमेंट किया है आपने, जैसे गिटहब
या ब्लॉग्स, ऐसा कुछ किया है आपने? हाँ, गिटहब पे मतलब मेरे कोर्स वगैरह जो मैंने किया है, ऑफ हाँ, कोर्स उसमें एआई का वगैरह भी हेल्प लिया है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हम लोग। हेल्प लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसको, ओके, उस एप्लीकेशन को डेवलप करके दूसरे से किया है। फीडबैक लिया है, या उसको लाइव किया है, उसका यूआरएल बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट बनाया है, ऐसा कुछ किया किया है है। आपने? गिटहब में डालने से कुछ हाँ, नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने लिंक्डइन पे भी मतलब वो पोस्ट किया है। मैंने एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन था, उसको टेराफॉर्म से मतलब एक नया EC2 इंस्टेंस सर्वर क्रिएट करके उस पे यूजिंग डॉकर और एंसिबल डिप्लॉय किया था, वो है। ये तो मगर बेसिक लेवल का हो गया ना, ये तो कोई भी कर सकता है हाँ, ना। तो सो राइट। व्हाई शुड आई हायर यू? सी, ये तो कोई भी फ्रेशर भी करेगा, तो मैं उसको 3 लाख रुपए देके हायर कर लूंगा ना। आपको 5 लाख बराबर। रुपए, क्योंकि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप 3 लाख पे तो आने वाले नहीं हो। आपका मिनिमम नहीं। एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो 7 to 8 होगा, लेट्स अज्यूम सो। हाँ, राइट then, राइट। then so why should I hire you? You are as same as almost a 1 year experience. So my suggestion is, make yourself to the next level. People will hire you for the level you are, not for the level you ओके will become. ओके। Right? For example, राइट। I am always hired for a technical job. Yeah, no ओके। one will हाँ, hire me for management. सविंदर जी से बोलूंगा, गुरु मुझे VP ऑफ स्ट्रैटेजी हायर करेगा, तो बोलेगा बाप तू मेरी आके मार देगा। मगर उसी को मैं बोलूंगा राइट टेक्निकल डायरेक्टर बना ले, तो सोचेगा भी नहीं वो। So it all राइट depends. You need to, they will hire you for the level you are, not what you will become in 3 years. Company is not going to spend time to hire you, then train you, and then, because in 6 months' time you get the training and you leave, it's a total loss for them. Companies in राइट। India run on very low margins. Yes. So my suggestion यस। is, go to the next level where you can say, I'm already at that level, prove yourself at that level, and then apply for a job at that level. Don't expect the companies to do it for you. ओके, नेक्स्ट लेवल यू मीन टू से लाइक अभी मैं 3 tier एप्लीकेशन कर रहा हूँ डिप्लॉयमेंट, जैसे कि अभी मैं Okay. Let's, I नॉर्मल think EC2 पे कर रहा हूँ। we should give time for other people. Ping me on LinkedIn. ओके मैं आपका पोर्टफोलियो देके आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है? ओके। सर आपका नाम मतलब गुरु से तो नहीं मिलेगा? अब मैं अपना लिंक्डइन डालता हूँ कमेंट में, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है? दूसरों को भी ओके टाइम फाइन। दूंगा, ठीक है? Thanks, थैंक यू thanks. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay, Manish, go ahead, please. Yeah, sir, am I audible? You're a little Not well. faint, but yeah. Can you increase your input volume, please? Yes, yes, I'm trying. Am I audible now? Yeah, Yeah, bit better, better, bit better. Go better. ahead. Go ahead. Yeah. So in 2021, I was running short of funds, so I decided to do some non-technical job, and then after saving some amount, I spent money on my course of Monster. So from that time, then in 2022, I left that job, that non-technical job, and then I started preparing for Monster. So in uh, half of the 22 was over when I left the job. So from that time, I was preparing and I have done jobs in 3 4 companies. So, but I am not able to complete Merge because I'm feeling that it is a lot more for me. So, is there any advice for me that I should, how can I overcome this problem? And also, I want to know that yes, yes. First, my first question is that So, Manish, what job are you doing right now? right now I'm not doing any job, but from 2023 I started a job of software engineer. Okay, and when did you move out of the job? Uh, from last job, Yes. uh, this 30th
June. So since 30th June, you don't have a job, Yes. right? Yes. Yes. Correct? Yeah. Okay. And so you've been trying to study MERN stack for what, over in almost 2 years now? Yes. Yes. And how Yes. much time do you think it should take to get a decent Uh, level of confidence on MERN stack? I think minimum 3 months is Three sufficient months. for. Yeah. Okay. So what should take 3 months hasn't happened in 2 years, Yes. Yes. right? Yes. What reply do you want me to give you? I was expecting that. Should I do complete the MERN stack, or should I apply for the job right now, because I have done work in some company with my partial knowledge of MERN stack. Only one way to find out, right? Apply and see if some you get some interview calls. If you get some interview calls, see if you get selected. What are you looking from us, from this live? What answer are you expecting? What should have taken 3 months could not be completed in 2 years. What's your question now? My What do question you is that expect us to tell you? yeah, my I'm getting pressurized from my family that you do work in companies in 3 4 months, and then left these companies because of some issues. So either you should do that software engineer job, or go for Xerox or stationery shop business. So I should go for the stationery Xerox business, or I should continue software engineering. Is that a question you're asking us Yes, based on yes. this 2 minute discussion? Are you serious? Yes, I'm serious. I'm But if concerned how about my. can I tell you that how do you expect us to tell you to open a Xerox shop? What do you want? Can I you think even it's a hear priority yourself and what you're focus issue. saying? Can you even hear yourself? You said, I've been trying to do MERN stack for the last 2.5 years. I've not been able to do that. You join any company, you leave in 3 4 months. Now your question on a supposedly technical channel is, should I open up a Xerox shop? I don't know. Manish sir, What I know have I my is, told my you? are you married? Just Guru, just give No, me I'm not. one minute, please. Uh, Huh? No, Are you married? I'm not married. No. no. Okay. Okay. Your Good. number one priority has to be make money, Yes, right? yes, yes, Whatever shape form you do it well, do it the right way, so that the money increases gradually. Whether it is a shop, whether it is a job, whether it is a business, whatever it is, doesn't matter, right? That's the yes, goal, yes, correct? yes, Yeah. From yes, what I'm understanding, that goal hasn't happened for the last 3 years. Is this correct? yes, Yeah. this, So the yes, this is correct. problem is not MERN stack, problem is not software engineering, problem is not Xerox, problem is somewhere else. Problem is you're not able to pick up one thing. One slight pressure comes, one slight problem comes, you cave everything and then you run away. That's the problem, Well said. right? Well said. Problem is you're scared of something. Problem is you're not able to take pressure. Problem is you're not putting in the efforts. That is the problem, Yeah. Well said. right? And sir, No Manish matter sir. what you do, you land up at the same place. I can Yeah. promise you, unless you And change. I'll tell you, Yeah, Manish Guru. sir, I'll also tell you, setting up a Xerox or a photocopying business is not cheap. Trust me. It Yes, is hard work with hardly any margin Yeah. of money. yes. 10% 5% मिल गया तो बहुत बड़ी बात है. Okay. So my suggestion is, Including, sorry for the interruption, including stationery also. yeah, whatever, do what you want. Setting up a business is not a small idea. I think
I think you are in an illusion that everything is easy. You are in a very bad illusion. My suggestion is go and look yourself in your mirror and think what are you good at. If you are not good at software engineering, if it takes you 2 years to learn a MERN stack and still not good at it, or you are leaving the company, whether you are leaving or you were told to go, I do not know. Yes, my suggestion is go and look yourself in the mirror and decide what you are good at and what will be a successful career for you. You don't have to be a software engineer to be successful. No, there are lots of other things. So don't listen to other people. You decide what is good for you and bloody go for it. Yeah. My dad told me that I will not be successful in computer science. I told me, just give me the money for my bachelor's degree. I self-funded my master's degree because I told me that is my passion. I did not have the money in my 12th. That's why I waited for 3 years. Yeah. So I think you have to stop it. You have to look into the mirror and decide for Yeah. yourself. All right, Manish. Please don't take it in a negative way. It's just an honest answer. Yeah. Please. I have one more question. I'm Manish, we have to go also to other people. Yeah, there's a lot of people waiting. We have to go. We have to talk to other people also. Okay. Yeah. Thank you. Thanks, Manish. All right. Karthik, go ahead, please. Hi, Savinder sir. Am I Hi. audible? Yeah, yeah, perfect. Okay, okay. Thank you. So first of all, I won't take much of a time. Everybody's waiting. So I have a two question. First of all, I'm transitioning from a customer support role. I have been working in a call center for the last couple of four and a half years. Now I'm transitioning to a backend engineering. I have, with the help of, GPT, I have decided and, um, made a curriculum for me for the next 6 months and have set a timeline in which I will study everything and get the job and all things. So currently, I have a one part-time job from which I support myself and couple of other things. So I'm stuck in two things. So I got to know to land a job, DSA is a pretty much important. So I'm not able to get the enough time for a DSA along with the development. So in a DSA, the basic topics are which I can definitely do it. So I'm just confused. The time which I shall give in a DSA, that time shall I give to a development? Would that be helpful for me? As I'm coming from a career break of 4.5 years, I just want to get into industry, be it any role. I just want to get the breakthrough. I'll take this, Savinder, if you Yeah, don't yeah, mind. sure. Good. Go ahead. Karthik, are you vegetarian or non-vegetarian? Um, Non-vegetarian. Non-vegetarian. Good. So you eat both. So if I tell you to only eat food, not drink water, or if I tell you to Uh, drink only water and eat food, not eat food, will that be good for you? Definitely not. Yeah. So now you get the answer. You can't do without both. Yeah. पानी भी पीना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा आपको, Okay, okay. और सरसों का साग भी खाना पड़ेगा और लस्सी भी पीनी पड़ेगी आपको. I assume you are from Punjab because of your surname. Yeah. No, actually, I'm from UP, so there are a lot of things I'm as well. sorry about that. I'm sorry. So No my worries, no worries. suggestion is, my suggestion is you need to Uh, learn to eat food and also drink water. You you have to do both at the same time. Ultimately, no one, the customer doesn't give a monkeys whether you're doing it in MERN stack or Java or MERN stack or HTML. तुम एक्सेल शीट में भी करो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. Suggestion is try to get a business outcome or an artifact which will drive an outcome. And for that, okay. whatever you have to learn it. When I was in 1993, DSA में कुछ था ही नहीं. हमको Hmm. सिर्फ algorithms पढ़ने के लिए बोलते थे.
मैं मैं असेंबली लाइन में लैंग्वेज में कोडिंग करता था। उसमें तो कहाँ डेटा स्ट्रक्चर था, कहाँ जेसन था, कहाँ अजैक्स था। वेब सर्वर को बैठ के ट्यून करता था मैं सिस्को के लिए। Okay. No, the thing is that, Guru, Agile Guru, I've seen you first time and already loved your answers. So, and I appreciate you are being blunt and honest. The thing is that, I'm just confused between the trivial part of DSC, the deeper Okay, things, the connect me separately. DP I'll help graph. you out. Okay, correct me separately. Let's go to the next Okay, question because there are a lot of people waiting. We have to be definitely, fair. definitely. I agree Okay, with what you. is the second question? You had two. No, that was my only answer. I just wanted to know, shall I totally focus on the development or just the basic No, of you a have to DSA do will both. work You have for to do me? both. You have to do both. 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 Ping me on LinkedIn and I'll and I'll The help you. same name you have on LinkedIn, right? Find Agile Guru. I just Google Agile Guru. It will come through. I'll be number one on the Okay, list. okay. Thank you so much. Thank you so much, Puri sir and Mohammed Thank you. Azalis. Okay, Himanshu, go ahead, please. Yeah, very good evening to all, Savindra sir, Guru sir, and Mohammed. Uh, my question, Himanshu, your I have to video is stuck. Can you reset your video, please? I think now, you put a lot. I think your now, video is now, stuck. now, Your video. That's it. Just video switch is off your stuck. video. Yeah. Switch it Oh, off and okay. switch it on again. Yeah. Now is it fine? No. Okay, Okay. it's Go ahead. my I think you Okay, took a go lot ahead. of effort. Yeah. Please go okay, ahead. Go okay. ahead. Go ahead. Yeah, sure. So, my question is, I'm having a database administrator role at a X company. Let's say I have just switched at this company 4 months back. I am having a offer which is giving me 30% more hike. I applied for all the jobs. The reason, first reason is I was not getting here some work because of my some of the uh, some company politics or whatever. But the senior, because of the dependency, is not giving work to not neither me. One other person was there who was like 1 year experience before me at the same company. सो आई डिसाइडेड कि इस जगह पे रह के अपना जस्ट रस्टिंग होने से बेटर है कि आई शुड मूव फॉरवर्ड बट व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यूज आई फाउंड आउट कि द इंटरव्यूअर वर मैनिपुलेटिंग मी और सेइंग मी दैट कि they were impressed with the knowledge I'm having with a 2 or 3 years of experience in DevOps and databases. They were saying कि 3-4 महीने में क्यों स्विच कर रहे हो, 3-4 महीने में स्विच करना नहीं बनता. आई सेड कि दीज आर द रीजंस. मैं वहाँ पे बैठ के 1 साल तक कुछ काम नहीं करूंगा और इन्हीं पॉलिटिक्स में फंस के रह जाऊंगा. सो बेटर देन, उससे बेटर है कि मैं कहीं पे जाके काम कर लेता हूँ, कंट्रीब्यूट करता हूँ. सो बट दे वर मैनिपुलेटिंग मी और लेट्स दे गिवन मी 30% ऑफ हाइक. एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई एम ट्राइंग फॉर सम अदर कंपनीज एज वेल. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो मतलब स्विच कर ही लेता हूँ. सो एक तो ये है कि एक फ्रीक्वेंट मैंने स्विच मारा है, मतलब 3-6 मंथ्स के अंदर अंदर लेट्स मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 6 मंथ के अंदर मैं एक अच्छा पैकेज लेके कर लूँ. और आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि मैं कर लूंगा करके. लेट्स से यहाँ जो जितना पैकेज है उससे डबल पे चला जाऊंगा. ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. इससे मेरे रेज्यूमे पे लॉन्ग टर्म में, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म मैं किसी अच्छी कंपनी में जाऊंगा तो उस समय मेरे कोई इफेक्ट रेज्यूमे में ना पड़े. एक ये थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैं डेटाबेस डोमेन के अंदर हूँ और डेटाबेस में मेरा जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला रोल है. तो मोर सॉर्ट ऑफ बेसिक बेसिक काम रहते हैं, बैकअप रिलेटेड ये वो. बट नाउ आई एम इनटू कि मुझे इस फील्ड के अंदर कुछ अच्छा करना है, मतलब कि बिकॉज आई ऑन अ डे टू डे बेसिस आई फाउंड आउट कि हाँ बहुत सारी फ्लॉज हैं उनमें, बहुत सारे फीचर्स एड ऑन हो सकते हैं माई एसक्यूएल MariaDB के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक हैं. तो हाउ कुड आई कंट्रीब्यूट टू देम ऑन दोज फीचर्स. मैं कुछ कर सकता हूँ क्या. और दूसरी चीज ये कि मुझे कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे टारगेट करना चाहिए, मतलब कुछ अच्छा रोल डेटाबेस के अंदर ही, जस्ट नॉट कि ये DBA वाला रोल. It is good to know the databases, how the industries are working over it and they are getting benefited from it. But at the very end, in India we are not having that much of एक प्रोडक्ट बिल्ड वाला माइंडसेट ना. तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा सोच ऐसा रहा हूँ बट मुझे नहीं पता कितना अच्छा. बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ कर पाऊँ तो कम्युनिटी में रह के तो एक अच्छा सा, मतलब मेरे को भी एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एट द एंड आई कुड कंट्रीब्यूट टू द टेक कम्युनिटी एज वेल. सो दीज आर माय 2 क्वेश्चंस. Who wants to take this? I'm done. I'm done. I'll take it, because you've Yeah. been giving a lot of answers. Okay. What's your name, sir? Himanshu, right? Himanshu. Yeah, Himanshu. Himanshu. Yeah.
You are a very lucky person, I'll tell you. You are very good at DBA, means you know the in and out of data, how to handle data. Correct? Yes, sir. The I'm world very much now, passive. let me finish, sir. Yeah. Very sorry, Uh, sir. the world now runs only on data. Yeah. What do you think LLMs are? They are just manipulating data. That's what it is. So you need to consider yourself very lucky that you have got a lot of experience in that. Leverage it. Now you are telling, see, think about if you were the employer and someone comes to you and gives an interview and says, मेरा जो ex manager वो चूतिया है उसको कुछ नहीं आता वो politics कर रहे हैं, would you hire him or her? No. So don't say like that कि I don't want to be second. Keep yourself professional. Go and say the opportunities available for me to grow is not available in that company. Your role, the role which you are giving me, is a good looks like a good opportunity. So that's why I applied. We can discuss and we can come to a conclusion whether it is good for both of us. You hire me, I'll give you more returns on the investment and I'll also learn, and together we can grow. That should be your input. That's how you should reply. Don't say, oh, my manager did not give me. For example, I was made redundant in my previous role. Yeah, in my 25 years career, that was the first time I was told to go. Yeah. But in my next interview, what they asked me is, why you've been jobless for 4 months? I said, I'm looking for the right opportunity. I got offers from others, but I said no because this was not looking good. I have not worked in this, whatever I'm working for. And this looks like a good opportunity where I can contribute more. And they said, do you know this? Do you know this? I said, yes, I know this. But this is not part of a typical bank job. I said, there is nothing called typical. I'm a very good problem solver. And once I saw that, half an hour later, I got the job, far more than what I used to earn in my previous company. And going to office is optional for me. So, what do you think is the main lesson here? Is get better, and learn and leverage. You're working only for 8 to 9 hours in your office. The rest of the time, use the things, leverage it. सीखो dev environment जाके ETL लिखो, ये लिखो. हर जगह 2 tier 3 tier applications नहीं होता है. Most of the banks runs on ETLs. Processing, batch processing, this and message system, this and that. Try to leverage data and try to play with data and try to create solutions which are not in the market, even if it's half-hearted. Go and create something. Once you create something and try to build something and host something, you will learn so much. How do you think I learned all the skills I have? Did my companies teach me? No, not even one. I learned it on my own. Do you think Savinder became a VP just because his company told him how to become a VP? Oh, Mohammad Imran is from a mechanical engineering. उसको तो कंप्यूटर साइंस किसी ने सिखाया भी नहीं. उसने कैसे सीखा? You have to think differently. As I'm repeating from my previous answer, people will hire you for the role which you are already doing, not what you will do in 3 years' time. No. So your DBA experience, your data and everything, leverage it and become better and become capable of what someone is asking and what is your North Star or your target. You work for doesn't really matter. People think that working in Google is sexy. No, it's not. There is too much pressure, and 50% of the time you are writing documentation. Even then, the documentation is not that good. Yeah. So don't think that farm companies are the best. Trust me, my co-brother is a director of engineering at Meta. Yeah, in California. The amount of pressure he has, he said that his co-brother, I mostly I make only 1/5 of what he is earning, right? But I enjoy my job. He said you have an office, you have things, you work 9 to 5 and go to movies, go on this holiday. He doesn't. He has pressure. So you have to lose something to get something. That's how it works.
So become better and have some fun and make it your passion. And if you're good at it, you will become successful. Does this make sense to you? Yes, sir. It was quite helpful. Am I audible now, sir? You're audible, Am but Yeah, a I- yeah. bit stuck, but doesn't matter. Please continue. Yeah. So yeah. So sir, I would just conclude, just giving one note here that I am very much passionate about or around the databases, and I am having like working on my day-to-day role is MariaDB, but I'm learning PostgreSQL as like in my free time. All the database internals I am working on my own, then on also posting on the LinkedIn as well. And believe me, sir, I am like literally like loving all the internals, like how the things are working behind. And I also sharing all of my stuff over the internet, whatever I learn on my job. That also I learn try to share, because lots of people hide those things and say कि मत करो share, but I say कि नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता है मैं share करता हूँ, because I also do not find it. I also create a lot of for these small production hacks. So yeah, thank you so much, sir, and I will keep doing the things which I am doing, and also will accommodate the things which you have said. The first answer of like say being the professional, more Yeah. professional. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you, Manchu. We have to talk to other people here. We have to make it a Yeah. little quick. Thanks. Okay. Raj, go ahead, please. Yeah, good evening. Am I audible? Yep. Okay. So currently I'm working in a small startup and my expert is on Java full stack. But actually I'm a fresher. So since 5 to 6 months I'm working. But my question is, along with my job, I'm also searching for freelancing jobs for front end, back end, both expertise I have. For deployment point of view, my roommate is taking care of that deployment. But I'm working only monolithic application, not microservices application. So for freelancing point of view, I'm searching only monolithic application, but I'm not getting enough client. I'm getting client, but the clients are not giving money and not converting to give the work. So should I continue with my side hustle, or I will continue with my job and get good enough knowledge on microservices? So, Raj, how are Yes. you searching for these gigs on some platforms like Fiverr, Yeah. etc.? Yeah, I'm active on Fiverr, but not getting enough client from Fiverr. Most client I'm getting from LinkedIn, either Facebook groups like that. Okay. And what is the goal with all of this? Why are you trying to do freelancing? Is it for money? Is it for experience? Both? What's the goal? Both. I have experience. I can build applications, so I feel confident that I can build application for hotels and clinics. So already I have done few application that. So I'm trying side hustle also. Okay. And why only stuck at monoliths? Why not try Because and experiment with some other tech also, with some sort of microservice? Because I am a fresher, I have expertise on monolithic microservices. For microservices, I have to learn and give time, and along with that, I am doing job also. So either I have to choose for job, I have to upskill on microservices, or I have to stick with monolithic and build application for micro enterprises and give the services like that. And along with that, I can improve my skill also. I have two paths. I have to choose one, right? Both of the things is not possible because don't have enough time to do both of things. And what, according to you, which path will give you more um, experience and more exposure? What's your thought? That one I'm not clear actually, but I feel happy when I will do because see, independent if I will do something for other business. If I will do job, then I have to work under boss, and I have No, there no, is that's no not the such question. Raj, it's career not a growth question as of money point of view. If I will think no, no, Raj, it's not a question instantly, of I am talking whether about. you should do a job or do freelancing. That's not the question. The question I'm asking is, currently you Sorry, I'm know not a getting your monolith. voice. Can you hear me?
So the Raj, the question I'm asking you is, currently you have worked in monoliths. I'm asking you, if you stay there versus you start dabbling around in microservices, you learn a bit of cloud, you learn a bit of containers, which one of these two will give you better exposure and more growth opportunities? What do you think? I'm not getting your voice actually. Can headphones? Fix your My mic. mic should be okay. Hello? Guru, can you hear me? Yes, we can hear you, sir. All good. It's not your I problem, think Savinder. his It's Raj's AirPods problem. got disconnected midway. That's why he can't hear Acha. us. Okay, you can Yeah. give the answer. I will see after that live. Okay, I think it is a problem with my audio. Okay, the answer is very simple, buddy. You have to learn more things. Learning sorry. So come out of the monolithic world, learn other things, learn cloud, learn how containers work, learn how microservices are run. That will help you in your job and in your extracurricular gig as well. That's the short answer of it. Don't get stuck at one point. Multi-skill yourself. That will help you. Okay? All right. Yeah, we'll Okay. see it Nikhil, afterwards. are you there? सो गया क्या? नहीं नहीं सर, बेड पे था, मुझे लगा सो गया। सर यहाँ पे बारिश हो रहा है सर। कमरे के अंदर? सर गुरु, you're मेरा on mute. क्वेश्चन ये है कि मैं अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, मैं फ्रंट एंड सीख चुका हूँ, मेरा बैक एंड का बचा हुआ है। पर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं बैक एंड सीख के जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करूँ या फिर सर अभी से ही मतलब सर्चिंग वगैरह करूँ सर? अभी से सर्चिंग करो, जॉब मिल गया तो ले लो, नहीं मिला तो पढ़ाई करो, सिंपल बात है। हाँ, सिंपल, ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता अप्लाई है? करते हाँ, रहो ट्राई आराम से। करने में क्या जाता है? अगर आपको बिरयानी बनाने का शौक है और अभी चावल बनाने में ही आपको 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो सिर्फ चावल बनाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? तो सर मतलब एक पाथ मतलब दे सकते हैं सर कि मतलब कैसे नहीं, शुरू पाथ करें? किसी को नहीं देते सर, पाथ खुद को चलना पड़ता है। बात नहीं होता सर। हाँ, मैं कुछ और बोलने वाला था बट वो लैंग्वेज अलाउड नहीं है, ठीक है? हाँ, मुझे लगा ही था, अपना इसलिए मैंने हाँ, कवर किया। हाँ, इसलिए अपना PATH नहीं शेड्यूल होता, बनाओ, PATH अप्लाई होता करो। है। हाँ, ठीक है? सो पाथ किसी को नहीं दिया जाता, तुम्हारा पाथ आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? एंड 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 पाथ द के लिए थिंग इज, वीडियोस है ना, सविंदर सर ने बनाई हुई है बहुत सारी। बहुत हुई है सर, देखो। ये सब ना जेनरिक क्वेश्चंस है, दीस आर नॉट हाँ टारगेटेड हाँ, क्वेश्चंस, यस ठीक है? यस। दीस आर वेस्ट क्वेश्चंस। इट्स लाइक मैं खाना खाऊं या चड्डी पहनूं या फिर पानी पीऊं या नमक नहीं खाऊं, ये सब नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है सर। नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं बैठ के सिर्फ सेक्सी कोड लिखता हूँ बैंक में जाके और बाकी सब घटिया काम दूसरों से? नहीं, आधा काम तो मेरा साला मीटिंग में ही आधा टाइम जाता है मेरा, और खुद की रुलाओ मत पढ़ाई यार में अभी तो बहुत गुरु, फर्क पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता, रुलाओ मत अभी। हाँ, क्या पापड़ नहीं बेलने सर, पड़ते हैं बिरयानी खाने के पहले, ठीक है? नहीं सर तो सही है सर, मेरे को मेरा लेवल मालूम चला सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू ठीक, सर। थैंक यू, बाय। चलो बढ़िया। अरे यार, शिवी को करने दो यार, बहुत अरे बहुत शिवी, देर से वेट कर रही। शिवी शिवी जी, पहले थोड़ा लाइट तो जला पंखा, भाई, सॉरी, ट्यूबलाइट ऑन कर लो। गुड लाइट इवनिंग ऑन सर। कर सर पहले। एक्चुअली मैं एक हॉस्टल में हूँ ना, तो यहाँ अच्छा पे अच्छा बारिश हो रही है, तो इसलिए से लाइट कट है पूरी हॉस्टल की। अच्छा, तो वैसे वीडियो ऑन कर लो शिवी जी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, ओके ओके ओके। नहीं तो चलेगा, ऐसा कुछ हम लोग आपकी मजाक थोड़ा उड़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक अच्छा मीटिंग हो जाए उसके लिए ही बोल रहे हैं। ओके सर। थोड़ा माइक आपके पास लो, आवाज हाँ, कम आ बात रही है भाई, आपकी हाँ थोड़ी। देखो, अभी आपको थोपड़ा दिख ओके रहा है परफेक्ट, अच्छी तरह, हाँ बहुत अच्छी तरह दिख रहा है, बोलिए। ओके सर, गुड परफेक्ट। इवनिंग हाँ सर। जी। आई एम ए थर्ड ईयर स्टूडेंट इन NIT हमीरपुर, एंड आई हैव ए क्वेश्चन कि अभी मैंने रिसेंटली सेकंड ईयर में अपने DS से स्टार्ट किया था। तो एवरीबडी सेइंग दैट कि DSC में लैंग्वेज मैटर नहीं करती, एंड स्टार्टिंग में मैंने फ्रंट एंड स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर मेरे को फ्रंट एंड में वर्क करना है तो JS में DS से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने JS में DS से स्टार्ट कर दिया।
उस टाइम पे मेरे को कुछ ने मना भी किया कि नहीं तुम जीएस में डीएस से स्टार्ट नहीं कर सकते एंड ऑल बहुत सारे, बट किसी ने एग्जैक्टली रीज़न नहीं बताया कि हाँ तुम इस वजह से नहीं कर सकते हो। और अभी मतलब उस टाइम मेरे को 1-2 सीनियर्स ने सपोर्ट किया था कि कर सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी अप्रोच है। तो मैंने स्टार्ट किया। अभी मैं ट्रीज़ कर रही हूँ, तो ट्रीज़ में एग्ज़ैक्टली अब मेरे को प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई हैं। जैसे कि अगर हम क्यू यूज़ करते हैं मतलब ट्रीज़ में क्यू से, तो हमें उसमें लिंक यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रॉपर उसको पहले मैन्युअली डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इन एट द सेम टाइम दूसरी लैंग्वेजेज़ में हम जैसे कि सीपीपी और जावा में हम डायरेक्ट प्रायोरिटी क्यूज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो एट दिस टाइम आई थिंक दैट रियली मतलब अगर मैं एक नॉर्मली क्वेश्चन कर रही हूँ, तो सेम टाइम पे जो दूसरा बंदा सीपीपी और जावा से कर रहा है, वो सीधा कर देगा, बट मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मतलब बात वो नहीं है कि मुझे लिखना पड़ेगा, बट टाइम का भी होता है। तो अभी मेरे को कुछ ने बोला कि शिफ्ट कर जा, तो आई सेड अभी मतलब मैं ट्रीज़ कर रही हूँ, टॉपिक इतना भी ईज़ी नहीं है। उस टाइम पे मैं लैंग्वेज शिफ्ट करूँ पूरी, वो भी इतना ईज़ी नहीं है। तो आई थिंक कि अगर मैं शिफ्ट करती हूँ, तो एज़ अ सेकंड लैंग्वेज में किसी को यूज़ कर सकती हूँ कि यस आई एम डूइंग डीएसए इन जेएस एंड वहाँ मेरे को दिख रहा है कि अगर ये क्वेश्चन मैं कम टाइम में इस लैंग्वेज से कर सकती हूँ, तो मैं उसमें करूँ। एक अप्रोच हुआ है, ठीक है। और दूसरी है कि आई कंप्लीटली शिफ्ट ऑन ए लैंग्वेज एंड आई चूज़ जावा, बट सम सीनियर्स टोल्ड मी दैट चूज़ पाइथन, क्योंकि आज एआई का एरा है, तो तुम्हारे लिए वो सारे ऑप्शंस खुल जाएँगे। एंड ऑल्सो सर प्लीज़ एक ही एडवाइस दीजिए। मैं आंसर दूंगा Go ahead, इसका, go मैं ahead, आंसर देता हूँ, go ठीक है। ahead, go ahead. हाँ, अच्छा शिवी जी, हाँ जी सर। आप कॉलेज में हो ना? हाँ जी सर। हाँ, मुझे ना जिसने वो सीनियर ने आपको बोला ना पाइथन पढ़ने के लिए, उसको मेरी तरफ भेजना, उल्टा नंगा करके मारूंगा उसको मैं। मार पकड़ के उसको, मार हाँ पकड़ के हम दोनों की तरफ से एक एक लगा के आना उसको कल। हाँ, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है। आई टेल यू, ओके who सर। do you think, which industry makes the most money and most business? Which industry? Tell me. सर प्रोडक्ट बेस्ड, जो एज ए No, प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। डोमेन बोल रहा हूँ, डोमेन बोल रहा हूँ। डोमेन्स, हाँ, डेवलपर, finance, डेवलपमेंट, finance, finance, finance फाइनेंस। domain. हुँ, Finance यस। domain makes the most money. हुँ, 90% of all the languages used by banks are in Java. Some of them are COBOL. Some of them are in AutoSys. Some of them are shell script. पाइथन तो 5-6 साल पहले आया। आपको क्या लगता है कि एक नया लैंग्वेज गोलैंग आ गया तो सब लोग बैंक उठा के सब गोलैंग में जाएंगे? वही ऐसा सर। नहीं होता शिवी जी। I'll tell you, मैं स्प्रिंग आई एम जावा सर्टिफाइड IKM, which is very hard to pass. I'm सर। Spring certified, I'm Google certified, I'm AWS certified. हुँ, And I've been doing coding for 25 years. And even now I can say I know only 10% of Java or 10% of, I don't know, I think I know less than you in JavaScript. But that's not the point. The point is to solve a problem with your constraints in it. समझो कि मुझे जावास्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम जावा में मैं 5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, मगर आपका हुँ, टेक स्टैक ऑलरेडी एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट में है, तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि मैं इसमें जावा इंट्रोड्यूस कर लूंगी। ऐसा नहीं होता ना। यस सर। अगर आप वेजिटेरियन हो और बीच में बोले कि मटन टेस्टी है तो मैं मटन डाल दूंगी, ऐसा थोड़ा ना चलता है। नेवर। हाँ, आप अगर, ठीक है ये तो हो गया, अगर मैं आपको बोलूंगा पाइथन सीखो मत, पाइथन पका के देखो, खा के देखो, तो आप बोलेंगे उल्टी कर दोगे आप तो। मगर मैंने पाइथन खाया है और मुझे बहुत बकवास लगा वो, ओके सर। ठीक है, और मैंने ऐसी ऐसी चीजें खाई आप उल्टी कर दोगे। तो उस समय के लिए वो अच्छा था मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर दिन पाइथन मार के, क्योंकि इंग्लैंड में पाइथन नहीं होता, ज्यादा मार नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली, और वो इलीगल भी है। फिर मैं सलमान खान नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो द पॉइंट बीइंग आपके जो कंस्ट्रेंट्स में जो के देख के आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो अच्छा इंजीनियर होता है। ये टेक्स्ट स्टैक कहीं भी पढ़ लो, अगर एक चीज अवेलेबल नहीं है, जैसे अगर आप मुझे वेजिटेबल बिरयानी बना के दोगी तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरी बीवी तो उस पर थूकेगी भी नहीं।
वो बोले कि बिरयानी का मतलब नॉन वेजिटेरियन होता है। इमरान से पूछ के देखो, आई एम श्योर ही नोज मोर अबाउट बिरयानी देन मी। Yes, आज of भी course, मटन by बिरयानी research, बनी सर। right? So my question here is, don't overthink. Learn something, look at the tech stack and work within your constraints. आपके पास विंडोज मशीन है कि मैक है शिव जी? मैक सर, मैक मैक, मैक M1। हाँ M1 मैक है। अच्छा, मैं आपको एक एप्लीकेशन देता हूँ, उसका EXE बना के दोगे मैक में? नहीं पता। हाँ, फिर तो आपको कुछ नहीं आता ना। आपके पास मैक है, कितने स्टूडेंट्स के पास मैक होता है, और वो भी M1 मैक। माय गॉड, आप तो करोड़पति हो। तो why are you overthinking? Don't. So Learn should something I? this, learn something in that, and try to integrate and solve a problem. No one does software engineering for fun. It's a very expensive business. So Shivi, did don't you get your overthink. answer? Did Did you you get your understand your answer? answer? Sir, Vegetable not biryani Python से नहीं बन ये सब सकती। बिरयानी पाइथन में करना क्या, वो समझ आया? अल्टीमेटली खाना ही खाना है, बाय द वे। ओके सर। ठीक है। तो सर, जितना मैं हाँ, समझी कि आप ये बोल रहे हो कि किसी एक को पकड़ो और उसमें करो, नहीं ऐसा नहीं, मतलब, और ऐसा नहीं बोल रहा और हूँ। वेजिटेबल बिरयानी भी सीखो, नॉन वेजिटेरियन भी सीखो, और कभी कभी सिर्फ इडली बनाना भी सीख लो। और आप, अगर आप इडली बनाओगी तो मैं आपके घर में आके बैठ जाऊंगा हर दिन। सॉरी, ओके, मेरी नाउ बीवी आई आके बैठ अंडरस्टैंड। जाएगी। और अगर आप पराठा बनाओगी तो मैं आपके घर में बैठ जाऊंगा। सो इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, right? Whatever is relevant in the industry and relevancy in the problem, if it's very specific, ping me on LinkedIn. I will give you more tuning because it's getting too technical and बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। Okay, ओके I ओके think सर। it has to be fair. सर, Okay? लास्ट वन क्वेश्चन। हाँ, sure. रिसेंटली नहीं अभी नहीं, एक AI शिवी, टूल। अभी बाद में, बाकी लोग बाद वेट में कर रहे प्लीज, हैं। अभी और लोगों से ओके बात ओके करनी है। ठीक लॉट है, ऑफ ठीक पीपल ठीक आर है सर, वेटिंग। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच। है। Okay, Rajat, go ahead please. Hello, sir. My name is Rajat. I'm from Chandigarh. And first of all, thank you all for providing such good wisdom to all of us. सर, मैंने BSc MSc करी थी फिजिक्स में, एंड गवर्नमेंट वाली साइड गया, वहाँ पे कुछ बना नहीं तो IT ज्वाइन कर लिया। एंगुलर में स्टार्टिंग मिली थी, एंगुलर में 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, बट मेजरली स्टार्टअप्स में ही काम किया है। एंड नाउ आई वाज थिंकिंग ऑफ स्विचिंग टू सम गुड MNC. And usually, like, my plan, and it is totally motivated by whatever jobs I'm looking for, जहाँ पे या तो .NET मांग रहे होते हैं साथ में for a full stack developer role, or it is Java. I want to consolidate my next 10 years or so. So I was wondering, like, which one to choose, because there are equal opportunities in both of them, and you already know my background. In Angular, I have a pretty good, decent amount of experience, and in typed language and such. So, but I was wondering, and it has been like troubling me of late, what to start. And like 6 महीने तो ऐसे निकल ही गए हैं मेरे को सोचते सोचते, और कुछ opportunities भी निकल गई हैं. So, इसमें अगर आप थोड़ा सा आप पिछले दर्शन 10 देंगे मिनट तो. से सुन रहे थे क्या ये पॉडकास्ट? अच्छा, कुछ ऐसा ही हुआ है सर? नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया है, हाँ, सॉरी. हाँ, आप ऐसा करो। अच्छा, हाँ, आप ऐसा करो। नहीं, आप YouTube पे जाओ, अभी का जो टाइमिंग है उसके 15 मिनट के पहले का टाइमिंग नोट करो। और अभी एक ओके. शीवी करके एक बंदी है, उनको मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था, बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, पाइथन खाना और फिश कैसे मारना है करके। नहीं, वो मैंने तो सुना सर, वो मैंने सुना, पाइथन हाँ, तो पराठा एंड वही इडली. आंसर है, वही आंसर है। देयर इज नो Same वन answer. लैंग्वेज। ओके. I'll tell you, Java, Python, all this language will become distinct when quantum computing comes. जब क्वांटम आएगा ना, ये सब जो लैंग्वेज है ना, उसको कोई थूकेगा भी नहीं। वहां बाइनरी, हर लैंग्वेज अभी तो बाइनरी होता है, अल्टीमेटली बाइनरी में सब्स्टिट्यूट होता है। क्वांटम में बाइनरी नहीं चलता भाई। नो फिर डाउट, क्या? आई अंडरस्टैंड दैट, बट या आई जस्ट वांटेड टू, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा करियर अपना देखना है, एंड आई वांट टू सबको पिवट देखना फ्रॉम. है यार, करियर यार, वही क्वेश्चन वापस वापस पूछे जा रहे हो। सी द प्रॉब्लम, सबको अपना करियर देखना, सबको पैसा कमाना है। कौन यहाँ झकमाने के लिए बैठा हुआ है क्या? नहीं। ओके. So द Rajat, थिंग I'll इज, give you a simple 30-second answer. Right? You've already let go 6 months thinking about it. Right? Right. Don't analyze, paralyze.
Pick one, get an expertise, start applying. Okay, Right. it doesn't matter. Your goal is to get into a better position, get better salary, get a better role. That's your goal, right? Right. You're not in love with Java versus Python versus who gives a shit, right? So whatever you can understand, whatever makes sense to you, move, learn things, apply. 6 महीने निकल चुके हैं भाई, और एनालिसिस में 4 महीने मत लगा, शुरू कर। All 3 महीने का टारगेट रखो, लर्न समथिंग। इफ जावा डजंट गेट इन योर ब्रेन, pack it, pick up the second one. If that doesn't give, pack it up, pick up the third one, get the next job. That's what matters. Don't overcomplicate things. Right? Move fast. ठीक है? Yeah, thank you. Thanks, Rajat. Okay. सविंदर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। एक अच्छा फीडबैक आया है। सविंदर पुरी किक आउट अजाइल गुरु। He may be an expert but not a good mentor. Kick him out. Savinder Puri, kick out Agile Guru. He might be an expert but not a good mentor. Kick him out. That is my call. This is my stream. I decide who stays or who goes out. Thank you. I decide to invite him. If you don't like it, YouTube is a free platform. Take your pick. सर कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता लाइफ में. It's fine. It's my stream. I decide the rules. नहीं, मुझे मजे लेने थे. नहीं, of course. उसमें क्या है? अच्छा, अभी कौन है? निशांत. काफी देर से निशांत से बात हो गई ना हमारी? हेलो सर. निशांत, go ahead please. निशांत, you there? निशांत अटक गया. अब्दुल से बात कर लो या नहीं, सिराज बहुत देर से वेट कर रहा है यार. Yeah, Siraj, go ahead please. Good evening, sir. And I'm audible. Hello. Yeah, go ahead. Sir, I reply. Sorry. Sir, I'm pursuing my BE third year from a Tier 3 college. I have commented on थोड़ा your माइक पास में. सिराज थोड़ा में. हाँ. I have commented on your recent video that I am focusing on building my career in cloud computing, but in the areas which doesn't require heavy coding. So I've shortlisted some three domains. Like first is cloud architecture and infrastructure. सिराज समझ नहीं आ रहा यार. I can't hear you properly. Now, sir. हाँ, better. So, sir, I'm pursuing my BE third year from a Tier 3 college, and now I'm focusing on building my career in cloud computing. So, but not in the fields which does not require heavy coding. So, I have shortlisted some 3 to 4 domains. Like first one is cloud architecture and infrastructure. Second one is cloud security, and third one is cloud networking. I shortlisted 3 on the demand on the current market. So, which one do you think should I prefer as a fresher? This is my question. Imran, do you want to take this? I was also thinking like this only when I started learning, and I would suggest pick one and go for it, and you will require coding. You will need to learn coding as well. So थोड़ा उसका मन बनाओ, कोडिंग भी सीखना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी क्लाउड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बना रहा था कॉस्ट मॉनिटर करने के लिए अपनी कंपनी के लिए. तो उसमें डेटा के लिए आई नीड पाइथन स्क्रिप्ट टू इंजेस्ट डेटा. तो वो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो ये मत सोचो कि कोडिंग में बिल्कुल ही नहीं सीखूंगा. जस्ट पिक वन फील्ड एंड स्टार्ट लर्निंग, एंड साथ साथ थोड़ी कोडिंग करो ताकि थोड़ा मन बना रहे. तो ये आई वुड से कि माइंड से निकाल दो कि कोडिंग नहीं करनी है. वो तो थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ेगा. Rest, I think Guru can give a very good answer on that. Sir, what are the projects in cloud computing? Like I can't understand the projects. Like we have to just deploy our application on the cloud provider's platform. So what is project here, sir? Okay. So tell me, Siraj, tell me, why was cloud invented? Like to provide infrastructure. Like infrastructure हमारे को बनाने में I'm speaking. And what is this infrastructure used for?
Storing data, sir. Okay. Storing complete And where, data. what is this data used for? बाद में उसको रिट्रीव कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं. So it is for applications. Yes, sir. So bina application means it's like making a biryani without rice. Yeah. So you get the point. I'm a big foodie, so I'll give answers with food. Yeah. Okay. So the thing is, remember, the ultimate aim of cloud is to give the infrastructure to deploy services and applications, which are softwares. Yeah. Without software and application and services, cloud is like having mutton if you're vegetarian. Obviously you're non-vegetarian, but you know what I mean. For example, you won't eat pork. Yes, I'm pretty sure. See, if I Yes. give you a pig, most probably you're going to let it go. Alexa, stop. So the way it works is you need to understand what is needed and then trace back. Yes, if you want to go to, let's say, Ladakh, based on that, you will choose the dress you want to wear. Not choose the dress and then decide where I want to go. Point. Yes? Yes. So it's all depends. Like, don't you want to do cloud computing? Yes, but cloud computing is not like you will take an aeroplane and go into the cloud. No, it doesn't work like that, unfortunately. Cloud is also coding. Everything is software driven. Even the hardware is driven by software. What is VMware? It's a software, highly intelligent software. So my suggestion is don't overthink. Look at what you are good at and build projects which will use this in a cost optimal way and showcase, or build a product around cloud. For example, cost optimization, automatic reporting, ye banao, wo banao, sab kuch banao. And then you will learn so much, then you will see, oh, cloud computing is only 10% of the problem. I work in cloud for the last 15 years. I used to manage data. Trust me, I used to manage data centers for Volkswagen Group and DDB. It's not a sexy job. No, it's not. Now, what you have in cloud is nothing. Remember, if you really want to learn cloud, now you have to know how to manage data centers. Go and do it. Go and work in Germany, or go and work in like with OVH, or go and work with other companies like British Telecom, who host the data centers. That is cloud computing. You're not learning cloud computing, you're using cloud computing. So So, your Siraj, did you perception get is your wrong. answer? Did you Did you get understand your your answer? answer? Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay, bye. Thank you. Thank you. All right, Abdul, go ahead, please. Hi, sir. Good evening. Am I audible? Good night. Perfect. Sir, I had some few like different perspective and different question, different problem. Currently, I'm a second year student, like just moved in a second year, and in my first year only, I have taken like before first year I have taken 2 years drop. So in that time, I was learn just a drop for J. In that, I prepared, I cleared. Somewhere I got some issues, so I was not able to go. At that time, I learned Python and different coding languages. On the parallel side, I was working with one of the professor on the research paper, which I have been completing. So I have completed that. Then in the same process only, I was able to be in the part like get interested in entrepreneurship. I have even and when I have joined the college, I have started my startup after getting on idea which is on the hiring only, like how to make efficient in hiring and how to make much more valuable for HRs and students. Okay, so currently what is the situation is I have been Abdul, what's your following question? Come to the that's on question. Okay. like it the point has came, now I have to choose, should I go to the startup only towards the startup, or should I go to the just learning phase of my doing the BTech completely. But what I am seeing in the current market is like AI is growing and my market needs the product what I am building. But the thing is, my college also need my time. What's your And I, question, Abdul? sir, like I am not able to think should which path should I chase took at the first now.
like should I go to the startup now, or should I go directly to the directly put keep aside the startup and keep like in the path of learning the BTech, completing my BTech journey? So the answer is very simple. You have to complete your BTech. Don't leave it midway. Okay. Okay, you have to finish your education, right? Whatever you see in YouTube videos saying this guy dropped out and created a $1 million, $100 million business, that is 0.0001%. Doesn't happen with everybody, right? So focus on your college. If you can, along with college, if you can work on the startup, fantastic. That's great. If you can manage both. But if you have to choose one, college, good marks, and a job, that is most important. Thank you. So one more question, like currently I have completed my Python. Even I have been good in JavaScript and in the MERN side, but getting on the side of AI ML, the shifting, like I have been learning a data scientist, like I have chose the cohort of data scientist and been on the part. Now I have seen the transition of the AIs toward the AI, like sir has told about the Python is not. So like getting on the side, I am seeing the jobs are just moving towards only the Python, like mostly towards the Python in demand. So mostly should I, as I have chosen the data science, I should not focus on other and keep on focusing on the Python side? Who told you that companies are working only in Python in AI? So Who told you? so my senior only. How much experience does he have? Like he has a 6 to 7 years. If I have 25 years, if I tell you that he's talking bullshit, what would you say? So I will prefer you only. Thank you. Then he's talking bad things. Okay. Trust me, most of the things which are being done, right, is Go, Java, Python, JavaScript, whatever is needed, they use it. It's contextual, right? In some environments, some people use. I'll tell you, Meta uses assembly language within their chip to do most of the manipulations of your videos and audios. Do you think they're going to use Java and Python in a chip? No. No. Most of the GPUs have assembly language. And I know that because my co-brother was a director of engineering at NVIDIA. असेंबली लैंग्वेज में बैठ के कोडिंग लिखते हैं वो, उनके पास जीबी में रैम नहीं होता, केबीस में होता है. पाइथन को अब करने में साला 200 MB लग जाता है. ठीक है? So don't go in that perception that Python सब कुछ करेगा. Python is for data people who do not know how to write proper code. उससे इतने सारे libraries हैं इसलिए. Got your answer, Abdul? Got your answer? Okay, thank you. Stick to the okay, point. guys, we'll wrap up in another 10 minutes. Rahul, yeah, go ahead, please. Yeah, hi, sir. Hi, Guru, sir. Hi, sir. Hi, Guru, sir. I just have two questions, sir. The first one is I am a QA engineer, QA automation engineer since 2 years, more than 2 years. I have seen a lot of your videos in this, and they have inspired me to transition into DevOps. And I just wanted to know, like, how can I, after applying, how can I show my skills to the people? Like, I'm not even getting selected yet. In the resume screening, I'm getting rejected because I want to switch to DevOps, but I don't have anything to show for it. Rahul, why do you want to get into DevOps? It is something that I'm getting interested into, sir. It's been 3 or 4 months since I've started learning about DevOps. I have started learning AWS and shell scripting and everything, and I'm thinking to move forward with it. So I was just thinking to if I should apply. I have just interest in it. That's what I'm asking, Rahul. See, is it because everybody in YouTube is saying DevOps is awesome? That is why you are getting in? No. I initially started as a trainee as well, where I got some training in DevOps as well. But the project that I got from past 2 years was QA. So I have to transition into QA. That was the reason. See, Rahul, I'll tell you why I'm asking that question. You have 2 years of experience already. Right? In QA, right? Is that your total experience? Yes. Okay. Now, if you transition into DevOps, you will come in as a fresher. Okay. Right? Because those 2 years are almost gone. It will not carry forward in DevOps. Right? Right. Now,
if you're, unless you have a very, very valid reason, I would say get very good at QA and find a niche within QA itself. Okay. Not everybody has to do DevOps. I talk of DevOps because I am from that background. I also started as a QA guy initially. For 3-4 years, I was doing QA. Then I happened to get into this, Okay. right? So not everybody needs to get into DevOps just because you see a video saying, 40 lakhs, 1 crore, 5 crore. That is all videos. That is all thumbnails created for a reason for people to click, right? I'll be very honest. I'm not saying don't do it, but I'm saying don't make the transition because you are seeing a lot of noise. Okay. See, as LLMs become more popular and as niche LLMs come in, the QA will also change its shape and form and will become a very, very relevant field. QA is no longer Selenium and Load Runner. It is not that now, Right. right? There is a lot of AI which is coming into the new age QA automation tools where you don't have to write code, where you don't have to recognize objects and do all of that stuff, right? So I would personally say, unless you have a very, very strong reason, stay within QA, become the best QA automation engineer in your team, in your company, apply AI there, and that will be a very good career trajectory for you. ठीक है, थोड़ा लुक बैक, थोड़ा सोचो, देन टेक अ कॉल. और डेवऑप्स के वीडियो तो बना ही रखे हैं मैंने, वो देख ही लेना फिर अगर वो करना है तो. बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू थिंक. ठीक है, थैंक्स राहुल. ओके अर्जुन, गो अहेड प्लीज. Yes, sir. Hello, sir. Sorry, sir. ये क्या ऑन कर दिया? लॉट ऑफ स्टैटिक. ऑडियो नहीं आ रही है भाई. नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा. बहुत अच्छी तरह घुसा उसको. कहाँ रख दिया लैपटॉप भाई? अर्जुन माइक चेंज करके देख. हाँ, पहले ना ये सब टेस्टिंग कर लिया करो यार. हाँ, ओके निशांत, गो अहेड प्लीज. निशांत, यू देयर? निशांत कब से गायब है? क्वेश्चंस इन चैट ओनली. अच्छा, चैट में पूछ रहा है क्या? पता नहीं है. ठीक है, ही इज नॉट देयर. ओके, परफेक्ट. वी सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस टुडे. बधाई हो जी. कमाल कर दिया आज हमने. यस. एनी फाइनल क्लोजिंग थॉट्स? आई विल फर्स्ट आस्क इमरान. इमरान, एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर वी क्लोज? आई वुड से सर, आज वाले क्वेश्चन में ज़्यादा लोग सोचे ही जा रहे हैं, करने में फोकस नहीं कर रहे हैं. एंड लाइक बीच वाला गया तो लाइक बिल्कुल ही फोकस और वो नहीं था उसका, कि प्रायोरिटीज सेट नहीं है. तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन की अपनी प्रायोरिटीज सेट करो, टाइम टेबल बनाओ. ज़रूरी नहीं है आपको 6 महीने में सब कुछ करना है. अगर आपके टाइम की कमी है, थोड़ा एक्सटेंड कर लो, दिन में 2 घंटे दे के 9 महीने में कर लो ख़त्म. तो थोड़ा प्रायोरिटीज सेट करो और कंसिस्टेंसी का गेम ज़्यादा है रादर देन 6 महीने 9 महीने में. बिकॉज मेरे को 2.5 साल लग गया यार अपनी पहली जॉब मिलने में. तो नॉट एवरी वन कैन गेट जॉब इन लाइक 6 मंथ, 3 मंथ्स और 12 मंथ्स. तो अपना कंसिस्टेंट रहो एंड फोकस्ड रहो. आई वुड सजेस्ट दैट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर. परफेक्ट, मेक सेंस. थैंक यू इमरान. गुरुजी, एनी लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स? हाँ, एक आधा घंटा है तुम्हारे पास? नहीं. राइट. सो पीपल मुझे यहाँ ना जो बोल रहे हैं कि गुरु फुल स्टैक में काम कर रहा हूँ, बहुत कंपटीशन है. कंपटीशन हर जगह है. आयुष कुमार. सो जो कंपटीशन से डरा ना, वो मरा. कंपटीशन से ऊपर जाओ. कंपटीशन को बोला, अरे तुम लोग को कुछ नहीं आता, मैं तुमसे बहुत अच्छा हूं. या सो कंपटीशन से जो डरा वो राजू रस्तोगी है. Right? Number one. Number two, don't do a job because it gives you money. No. Do a job because it gives you happiness. 2 roti और खुशी is far better than 2 crore रुपए without being happy.
For example, I can never have the beard of Mr. Savinder. मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मेरी मुझ से और इधर साल जमता ही नहीं है, मैं क्या करूं? बट आई एम इन नॉट विद कंपटीशन विद सविंदर. सविंदर बोलेगा मैं लंदन में होता तो कितना मजा आता है ना, और इमरान बोलेगा गुरु तू जितना बिरयानी खाता है मैं खास का पाता. So there is no competition. It's like Savinder is doing what he likes, Imran is doing what he likes, I do what I like, and we enjoy our life. I am 52 years old. फिर भी मेरे बाल इतने अच्छे हैं. Of course, I can't compete with Savinder, but he's younger to me, so that's fine. Right? So the point being, please enjoy. Don't, you can buy the best beds. You can never buy happiness, or you can never buy sleep. So my suggestion is follow your passion. Sachin Tendulkar is good at cricket. He's very bad at singing. Lata Mangeshkar was the best singer, but she was very bad at cricket. I'm sure she is. So please, guys, is just that do what makes you happy and what is your passion, and do what you're good at, and don't cheat. Focus, of course, is the totally opposite, is cheating. Like, यार इसको थोड़ा सा हो गया ना, इसको देख के मैं जाके इंटरव्यू करके मैं करोड़ों कमा लूंगा, ऐसा होता नहीं है. आप पे जो इंटरव्यू लेने वाला था वो आपसे बड़ा होशियार बंदा होता है. So just guys, please focus, be good at what you do, become so good at what you do that competition does not exist for you. There should be no competition for you. I should not compete with Savinder on Dadi, and he will never compete with me on Java and Spring. No, he will not. And Imran, whatever he tries, he will not be good at as good as Kubernetes and infrastructure like me. It will take him 5-10 years. By the time I would have learned something else. So he's not competing, but that doesn't mean that Imran doesn't have the brain. He has brain. I'm sure his biryani is far better than mine. I don't know even how to cook rice. Am I bad? No. So my suggestion is be good at what you do. Do a reality check. Go and look into the mirror and say, मैं खुद से चीटिंग कर रहा हूं क्या? हाँ, तो पहले उसको रोक दो. सीखो, ट्राई करो, फेलियर्स देखो. पहले फेलियर्स देखो. जिंदगी में जो फेलियर्स देखता है ना, उसको पता चलता है कि क्या नहीं करना चाहिए. You will learn more by failures rather than successes. I'm trying to upgrade my sonar for the last 3 days. I'll tell you, it was a heck lot of pain in the ass. But फिर भी स्क्रिप्ट लिखा था इसलिए अच्छा हो गया. So the thing is, failures आप जितना learn करोगे ना, you will be far above. Yeah. So that's what you should do. Do projects and do have a lot of fun and invest in yourself. एक अच्छा मॉनिटर, एक अच्छा लैपटॉप, मैं मैक खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, विंडोज में भी अच्छा आता है. एक अच्छा इंटरनेट और एक अच्छा माइक इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है. अनलेस यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. भगवान ना करे अगर इसमें, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज पीपल, बट इफ यू लॉग इन फ्रॉम अ मोबाइल विद अ घटिया माइक, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द जॉब एंड नो वन एल्स विल. क्योंकि वो बोलेगा यार जिसने अपने आप इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसने खुद पे पढ़ाई नहीं की, वो क्या काम करे? क्लाइंट के सामने क्या बैठेगा? वो कंपनी की इज्जत चली जाएगी. So that's how it is. Please invest and have some. I'm not telling you to buy a gaming laptop, no HK. I'm telling you to get a decent one where you can do most of the stuff and leverage the free services available. But please get a decent. अच्छा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ. मेरी बीवी तो Let's close on that thought. That's a good one to close. ठीक है. All right. Thanks, guys. Okay, bye bye. Love you, Guru. Thank you. See you. Thank you. Thank you in the next one. Cheers. Yeah. Bye. Okay. Bye. Bye Bye. bye. Bye.